What is up, chat? I be live, I fucking live, bruh. I be live, bruh. I be live, chat. I be fucking live. I fucking live, chat. I be live. हम लाइव है कि नहीं? Chablu, chablu, chablu. Do we have any masala today? Do we have any masala today? Do we have any masala hunter? Is back. भाई तुम्हें पता है मसाले से मेरे को याद है चैट कुछ दिनों में ऐसा मसाला आने वाला है ना ऐसा मसाला तुम बस देखो मैं रुका हूँ बस उसके लिए कुछ दिनों में ऐसा मसाला आने वाला है ना चैट आपकी ना कंडिया फटने वाली है आपकी लेजिट Get कंडिया to फटने वाली है चैट आप डर जाओगे आप बोलोगे नियो भाई ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जिगोड का हाँ भाई जिगोड का क्या हुआ जो फटफट 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 देखे रुको तो हे गाइस कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो स्टोरी के सच के बारे में। टीम कोड लाइक के चैंपियंस बनने के बाद क्यों स्टेज पर जी कोड नहीं आए एंड एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन टीम में ऐसा क्या हुआ। फिर बात करेंगे एस12 की वो सैड न्यूज के बारे में जिस पर थक रिप्लाई किए एंड टीम एपेक्स गेमिंग को ज्वाइन करने के बाद लोल्स गेमिंग एक काफी बड़ी बात रिवील किए। तो वीडियो में काफी कुछ होने वाला है, आओ अपनी सिनर्जी बढ़ाते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं जी गोड एंड टीम गोड लाइक के बारे में। तो गाइस कुछ टाइम पहले कम्युनिटी में एक चीज के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था कि टीम गोड लाइक के चैंपियंस बनने के बाद वो स्टेज पर जब सभी मेंबर्स को इनवाइट कर रहे थे तो वहां पर फ्रंट लाइन में जी गोड खड़े हुए थे, वो हमको स्टेज पर देखने को नहीं मिले थे, ना ही उनको कोई इनवाइट किया था। वेल फाइनली भाई गाइस आपको वो क्या सब के लगता बाद है इस फर्स्ट बार टाइम आज जी गोड लाइव ठीक है स्ट्रीम करते हैं एंड वो बताए गाइस पूरा मैटर एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या उनके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें बोली Oh गई my जिससे god, जी no, गोड काफी god. हर्ट थे। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मैं ट्राई कर रहा था बट नहीं हो पाया भाई। मेरे को घर की बहुत बीटी हो रही थी, मैं डे 2 के बीच में निकल गया था, इतना ज़्यादा अर्जेंट में निकलना पड़ा मेरे को। बट फिर मैंने सोचा एक आखिरी दिन आ ही जाते क्यों ना। पूरी इंडिया ने देखा गॉड लाइक ट्रॉफी जीती है एंड आई एम वेरी हैप्पी क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए। बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब वो लोग जिस चीज़ के थ्रू सफ़र किए है ना, भले पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, वो चीज़ वो डिजर्व करते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो डिजर्व करते थे। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं सिर्फ उन दोनों लोगों के लिए खुश हूँ। What the बाकी fuck? ऑल गुड, जितना प्रोफेशनली प्लेयर्स What does this mean? What does this mean? काम कर रहे हैं, अच्छी बात है उनके लिए। आप लोग जो पूछ रहे हो आप स्टेज पे क्यों नहीं गए, आप ये क्यों नहीं गए, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में सुनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा किन से सुनी क्या सुनी, बट आई डोंट थिंक सो वो बातें मेरे तक आनी चाहिए थी। पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है, बट मुझे एक नहीं, मुझे 10 लोगों से पता चला, तो मुझे बहुत खराब लगा उन चीज़ों का। इसलिए मैं पर्सनली सिर्फ क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए खुश। बाकी What? क्रॉन्टन और अमर का नाम ले रहा है Does that mean? Does that mean chat? क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो? क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो? Hell nah, bro. You gotta respect. You gotta respect Prime TSM Z God. यार सब लाइफ में बढ़िया करें, मेरे को किसी से ग्रजेस वगैरह कुछ नहीं, अच्छी बात है, हमेशा बढ़िया करें। क्या बातें सुनी, किससे बातें सुनी, वो सब तो बताने के टॉपिक है नहीं, बट बहुत सारे लोग बोलते थे आप स्टेज पे क्यों नहीं हो। मेरा इकलौता रीजन वही था। मैं क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए बहुत खुश। मैंने उनको भी यही टेक्स्ट करा था कि बहुत अच्छा लगा, आप ट्रॉफी जीत गए, आप डिजर्व करते थे। दिन गुजर जाएगा बट वो चीज़ हमेशा याद रहेगी एंड यू चूज टू स्माइल इट। हंसते चेहरे तो मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने तकलीफ नहीं होती है। लास्ट मैच जब टैग ने चिकन मारा, क्रॉन्टन खड़ा होकर चिल्लाया था, उससे लास्ट मैच क्रॉन्टन अकेला खड़ा होकर चिल्ला रहा था मैच खत्म होने से पहले, तो वो देख के मेरे को खुशी हो रही थी कि अरे क्या क्या तू रो मत रे
तू रो मत, तेरा भाई है तेरे साथ खड़ा है। क्या चाहिए तेरे को, बता तू क्या चाहिए, बता। रो मत तू। कोई अज्यूम मत करो कुछ चैट, कोई अज्यूम मत करो। तू रो मत, तेरे साथ तेरा भाई खड़ा है रे। ठीक है, बट खुशी सिर्फ मेरे को 2 लोगों की। और गाइस नेक्स्ट हम Oh लोग my god, is he giving some hints? Is he giving some अबे देखो बट गॉड का तो, अबे गॉड अब मैं थक चुका हूँ लाडले, मैं तेरे को समझाते समझाते थक चुका हूँ। भाई तुम्हें पता है मैंने गॉड को ना, चैट, आप ट्रस्ट भी नहीं करोगे, मेरी अगर कोई बंदी रहती ना और मेरा ब्रेकअप होता रहे ना, तो भी मैं वो मेरी बंदी को ब्रेकअप करने में इतना नहीं समझाता जितना मैंने जीगॉड को ये पास्ट कुछ महीने में इतना समझाया है। मैं लेजिट उसको इतने बार, अरे देखो भाई, अच्छा फ्रेंड है मेरा, इसलिए उसको समझाता हूँ, क्योंकि मैं उसको देखता हूँ रियल लाइफ में। पता है, मैं उसको बोलता भी हूँ यार कि तू बहन पहले वाला गॉड नहीं रहा सालो। और ये चीज मजाक से हटके, सारे सरकाजम से हटके, सब कुछ से हटके मैं बता रहा हूँ कि मैं उसको लेजिट में जब उसको रियल लाइफ में देखता हूँ ना, अब वो पहले वाला जी गॉड नहीं रहा भाई। पहले वाला गॉड पूरे टाइम, और ये आप सिर्फ मुझे नहीं, आप यार किसी को भी, निक्सन को पूछो, शैडो को पूछो, लाला को पूछो, आप जॉनी को पूछो, हम सब भी ये बात करते हैं कि अब पता है कि वो पहले वाला गॉड नहीं रहा। पहले वाला गॉड ऐसे, पहले वाला गॉड कैसा था कि हंसता था, हंसता खेलता रहता था, जब देखो खुशी रहती थी उसके चेहरे पे एक, ठीक है। कोई अगर एक टॉपिक चल रहा है तो खुद को खुद से इन्वॉल्व करता था, उसका एक ओपिनियन रहता था, उसका एक स्टैंड रहता था, और मतलब मजे में रहता था। बट इन कुछ पास्ट कुछ सालों में भी नहीं बोल सकते, लास्ट 8-9 महीने में अब वो मेरे को ना पहले ऐसा लगता ही नहीं है। मतलब वो ना अब खुश रहता है, मतलब वो हंसता भी है तो ऐसा लगता है कि मतलब दर्द में है, ऐसा लगता है भाई मेरे को, दर्द में सैड है वो। और मैं उसको पूछता भी रहता हूँ तू क्यों सैड है, क्या हो गया तेरे को, तू मतलब बहुत बार बोला गॉड तू ना यार, गॉड तू वो कर, गॉड जो तेरे को अच्छा लगता है, तू ना इतना मत सोचा कर ना 10 चीजों का कि कौन क्या है, कौन क्या सोच रहा है तेरे बारे में। जी गॉड टॉक अबाउट इट, क्या गॉड क्या बात किया मेरे बारे में। मैं तो उसको वही बोला, गॉड देख एट द एंड ऑफ द डे सब अपना अपना ही सोचते हैं। मैं तू, अबे दक्ष मादर चोद, ओए रुक जा। दक्ष साला स्ट्रीम देखता रहता है, स्पोक ऑडियो एंड लाला वो देख, बिगड़ मेरे को भी पहले, कहा गया यू कैन डू दैट शिट ब्रो, द फक, तूने मेरे को भी पेल दिया भोसड़ी वाले। तो तेरे बारे में दो अच्छी बातें कर रहा, तुझ मुझे ही छेड़ रहा है। अरे जोनाथन भी बोला था उस किसी, किधर बोला भाई, क्या टाइम स्टेप भेज, ओए क्या गया ब्रो। बात करने वाले हैं ऐसे ट्वेल्व की एक कौन से ब्रो, कौन से जी गॉड गेमिंग। नहीं रहा था, कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बट मेरी मम्मी के साथ मैंने एक स्टोरी डाली थी। तो क्या दो टाइम साल स्टेप बाद है। घर पे गया था मैं, तो यस होती है उनकी, प्योर उनकी मेहनत की होती है, तो उनको मतलब वो स्टेज उनका बनता है यार। तो मेरा एनीमे, एक ये भी रहता है, अबे मतलब नहीं, क्या चल रहा है, और आप वो एक बाउंड्री नहीं रखते कि नहीं भाई ये तो हमारा भाई है, इसको कुछ भी बोल सकते। 111, बट कभी 15-10। फैमिली वालों के साथ में यार, मुझे एक नहीं, मुझे 10 लोगों से पता चला, तो मुझे क्या बातें सुनी, किससे बातें सुनी। हट, नहीं बोला है, 10 अलग टाइम तो हे स्टेप गाइस स्पैम हो कैसे हो रहा आप सब, आज हम लोग है। बात करने वाले हैं वो स्टोरी अबे गॉड को थोड़ा मोटिवेट करो भाई। और एक सेकंड यार, एक सेकंड। के सच के बारे में बट यार वो गॉड सड़ी वाले कर यार, जो कितने बार उसको समझा चुका हूँ, अब बेंच वो करना जो अच्छा लगता है बेंच। कब तक दुनिया का सोच के चलेगा। हो रही थी कि ठीक है, बट
खुशी सिर्फ मेरे को 2 लोगों की। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA12 की एक न्यूज के बारे में जिस पर थक रिप्लाई करते हैं। तो गाइस अभी के टाइम पर EWC के लिए क्वालिफिकेशन रन चालू है, बट काफी सारे गेम टाइटल्स में SA12 के लिए चीजें काफी अच्छी नहीं गई हैं। पहले हमको MLBB की बैड न्यूज सुनने को मिली, देन PUBG PC, देन BGMI एंड अब वैलोरेंट की भी काइंड ऑफ सेम न्यूज है। तो वो चीज के अराउंड एक जन थक के बारे में ये लिखे है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि थक को कितना बुरा लग रहा होगा अभी के टाइम पर। फिर ये चीज पर रिप्लाई करते हुए खुद थक ये लिखते हैं, सच में बोल रहा हूँ एकदम esports बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लोल्स गेमिंग एंड टीम एपेक्स गेमिंग के बारे टॉप में। स्टोरी। इस टीम को ज्वाइन करने के बाद लोल्स गेमिंग जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम किए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही एकदम उनको फैंस की तरफ से क्रेजी रिस्पांस देखने को मिला, जिस पर रिप्लाई करते हुए लोल्स खुद ये लिखे, थैंक यू एपेक्स आर्मी इतने प्यार एंड सपोर्ट के लिए। पहले लाइव स्ट्रीम पर गाइस लोल्स बात करते हैं टीम एपेक्स गेमिंग एंड उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। बिहाइंड द सीन टीम एपेक्स गेमिंग क्या चीज 26 किल टॉप ने मारा, किधर किया? 26 किल कहाँ मारा भाई टॉप ने? कर रही है एंड आने वाले दिनों में जो भी हमको बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ब्लॉग देखो, अभी जब मैं गया था शूट करने तब मैं प्लान तो किया था बनाऊं, बट फिर वही है कि शूट वूट पे इतना बिजी हो गया था कि फिर वो मतलब टाइम नहीं निकला उसके लिए। बट इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने मिलेंगे आपको, करेंगे बहुत बहुत तगड़ा प्लान से, वो सारे एग्जीक्यूट करेंगे धीरे धीरे। लकी भाई आप पागल हो जाओगे जब कंटेंट आना शुरू होंगे, एक बार शुरू होगा तो वो रुकेगा नहीं वैसे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गुड लाइक डायनेमो एंड टीम हाइड्रा के एक्स मेंबर्स के बारे में। तो रिसेंटली गाइस ये मैटर के बारे में हम लोग बात किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एक गेमर है बाय द नेम रेयरबिट, काफी टाइम पहले जो कि टीम हाइड्रा का पार्ट हुआ करते थे, बट अभी रिसेंटली डायनेमो के टीम गुड लाइक को ज्वाइन करने के बाद वो लाइव स्ट्रीम पर आकर कुछ रिएक्ट कर दिए थे, जिसके ऊपर गाइस डायनेमो गेमिंग के क्लोज फ्रेंड डेंजर रिप्लाई किए थे एंड वहां पर गाइस वो किसी की भी साइड नहीं लिए थे, बट ये बोल दिए थे कि उन दोनों का ये मैटर है, मेरे को नहीं बोलना इसमें कुछ। फिर इसके बाद गाइस कम्युनिटी में काफी लोग ये मैटर के बारे में बात करना चालू कर दिए कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। फिर डायनामो की तरफ से हमको एक रिप्लाई देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात की डेंजर के बारे में एंड साथ ही में बात करते हैं रेयरबिट के बारे में, जो कि अभी के टाइम क्या चल रहा है यार, ये हाइड्रा टीम गॉड लाइक का पार्ट तो है। बहुत मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि भाई यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस चीज में, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता। अब जब आप हमारा हिस्सा नहीं हो, आपका कोई सेंस ही नहीं बनता बात करने का। सो जब आप हमारा पार्ट थे तब तो हमने बहुत सपोर्ट किया है आपको, हमने कभी ऐसा बोला नहीं एंड हमने आपको ये भी बोला कि भाई सबके साथ खेलो, टीम के साथ खेलो, स्क्वाड बना के खेलो। तो भाई साहब के रिएक्शंस या रिप्लाईज ये थे कि यार मैं भी नया हूँ, मुझे लोगों में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, मेरी किसी से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई टाइम ले लो, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके। एंड टाइम लेने के बाद फिर दोबारा कि भाई यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये मेरे दोस्त है, मैं उनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। एज ऑर्ग भी फिर तुम क्यों ऐड हुए हो, कोई फायदा हुआ ऑर्ग में आने का? कोई फायदा नहीं हुआ, अगर तुम्हें सोलो ही करना है सारी चीजें। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है भाई, डेंजर जैसे अगर मैं डेंजर को भाई बोलता हूँ, ठीक है, कल चल के डेंजर को कोई अगर कुछ बोलेगा, मैं उस बंदे से बात नहीं करूंगा, कनेक्शन रखना नहीं रखना पूरा मैं कट ऑफ कर दूंगा, बिकॉज मेरे लिए हमारे भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टाइम था जब लड़ते थे लोग इसी में कि भाई यार आज मैं खेलूंगा, आज मैं खेलूंगा, एंड अब जब मैं ये सब चीजें देखता हूँ कि कोई चुतिया वहां बैठ के हग रहा है और तुम उसी के साथ खेल रहे हो और तुम मुझे भाई भी बोलते हो, तो यार ये थोड़ी सी बुरी लगने वाली बातचीत है। पहले रिएक्शन के बाद my God, bro! गाइस का भी एक रिप्लाई देखने को मिलता है, जहाँ पर काइंड ऑफ वो बात की कि एग्जैक्टली रेयरबिट जो बोले थे डायनेमो के लिए वो उनको पता ही नहीं है। ये रेड वीडियो आना भाई, ये रेड वीडियो से मेरा ने बैठे लोग बोलता है चलो डेंजर बैठा है, कुछ किया ही नहीं उधर। डेंजर को पता भी तो होना चाहिए वो क्या बोल रहा है स्ट्रीम पे। अब ये सब के राउंड गाइस एक और चीज थी जहाँ पर ये बोला गया था कि जो टाइम पर टीम हाइड्रा एंड टीम गोल्ड लाइक के मेंबर्स के ग्रुप गेम्स हुए थे, वहाँ पर कुछ मेंबर्स को इनवाइट नहीं किया गया था। मिसल ना करने के बाद हम पागल की तरह नहीं घुसेंगे ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत लगती है उधर। तो वो चीज के ऊपर भी रिप्लाई करते हुए डायनेमो बताया एग्जैक्टली क्यों वो ऐसा नहीं किए। सो उस दिन इन दोनों को मैसेज ना करने का रीजन यही था कि हम लोग जब खेलने वाले थे साथ में, तब तक की सारी चीजें जबरदस्त थी। फिर ये रेडबिट वाला मैटर एकदम से हो गया। मैंने क्लियरली एक मैसेज लिख दिया था कि आई एम नॉट फीलिंग अ वाइब विद यू गाइस एट ऑल। मैंने क्लियरली व्हाट्सएप मैसेज में लिख दिया कि गाइस मुझे आप लोगों से वाइब नहीं आती है, आई एम रियली सॉरी, अब वो पुराना हमारा बॉन्ड नहीं रहा, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। अगर हम पीसी गेम्स खेलेंगे मैं डेफिनेटली आपको बुला दूंगा। लेकिन उसी दिन वो कांड हो गया, मुझे मालूम पड़ गया कि हमारे दो भाई उधर थे। आज एंड ही करा कंट्रोवर्सी का, और मैंने पहले ये चीज बोल दिया था कि दिस इज नॉट अ कंट्रोवर्सी, दिस इज समथिंग के भाइयों के बीच की बातचीत है। मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा भाई होके चीजें खत्म कर रहा हूं, ताकि कल चल के आप उनको परेशान ना करो और हमें परेशान ना करो। भाई मैं तो फैमिली मानता हूं यार गाइस, ठीक है, मैं तो नहीं सहूंगा, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उन दोनों को संभालने दो भाई, मैं तो जी फाड़ दूंगा भाई, सिंपल सी बात है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्नैक्स गेमिंग की तरफ से। वो बात की उनके काफी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो कि BGMI के साथ आ रहा है, एंड इस पर हिंट देते हुए गाइस वो ये कहे कि ये चीज से वो वापस से BGMI में वायरल होने वाले हैं। बहुत क्रेजी चीज आने वाली BGMI में मेरे,
मेरे से रिलेटेड गेम में क्या आ रहा चीचा बीजीएमआई में मेरे से रिलेटेड बहुत क्रेजी चीज आ रही पब्लिक, मतलब मजा आ जाएगा तुम लोगों को, एकदम मजे आ जाएंगे तुमको, फिर से वायरल हो जाएंगे अपन गेम में। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक सोमे की तरफ से। वो बात की टीम गॉड लाइक के प्रैक्टिस के बारे में। मैच रिसेंटली टीम ओरेंगुटैन के प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम पर ये कहे थे कि वीजा कंफर्म होते ही वो माइंड पॉसिबल नेपाल से स्क्रीम्स खेलते हुए दिखेंगे। तो वो चीज पर सोमे रिप्लाई नेपाल किया एंड साथ ही नेपाल में जा बात रहे की क्या? कुछ बैड कमेंट्स के बारे में। पता नहीं यार किसको हेट दे रहे हैं, मेरे को तो कुछ आया नहीं हेट मैसेज। तुम्हारे भाई के थोड़े नहीं है, ठीक है, बाकी सब प्यार ही करते हैं। लेकिन मेरे को तो कुछ किसी ने Oh my बोला नहीं, God, कि अच्छी बात भी है। you gotta be in my shoes, bro. आग के दरिया से गुजरता हूँ हर दिन। नेपाल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो भी नहीं पता अभी तो, बाकी देखते हैं यार। भाई आप जब इंटरनेशनल होगे तो बीजीएमएस मिस होगा यार, ये तो इसका तो आइडिया नहीं है। बीजीएमएस मोस्टली अगस्त में ही और हम भी अगस्त में जा रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोल गोब्लिन की तरफ से। वो बात की है उनके न्यू टीम के प्लेयर्स के बारे में। एग्जैक्टली ये उनकी न्यू प्रैक्टिस टीम में कितने प्लेयर्स होने वाले हैं। मैं जैसे नहीं खेल पाऊंगा तो मुझे प्रैक्टिस के लिए टेम्पररी टीम है ये मेरी, जो सिर्फ मैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट खेलूंगा जिसके वजह से मेरी प्रैक्टिस ना रुके। इस टीम में टोटल ऑफ 5 मेंबर्स है, 5 में से 3 कंफर्म है। ब्लॉक को कंफर्म कर चुके हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर है। बाकी 2 के हम लोग खिलाएंगे, नॉक्शियस है और एनजो है। सेकंड थिंग बता रहा हूँ, तो ये टेम्पररी है तो थोड़ा खेलेंगे, अभी अपने पास टाइम है, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट होगा, yeah. टीम गोल्ड लाइक के मेंबर हैवान की तरफ से। वो बात की है लोल्स जॉइनिंग टीम एपेक्स ओ हैवान, हैवान, हैवान है। अबे हैवान साले, तू तो ईद का चांद है। हैवान No idea why he didn't support Godlike, but I'm very super happy for him that he joined tag. जो आपको अच्छा लगता है, जो करना है आप वो करो, खुशी हूँ उसके लिए। hell yeah man, hell yeah हैवान, let's अच्छा लगता go। है उसको Godlike में रहना था, Godlike में रहे, उसको टैग ज्वाइन करना है, टैग ज्वाइन करे। Who are we to say anyone? और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक नैरेटिव के बारे में। अरे हैवान जब मेरे को लगता है ना हैवान, तब हैवान आ जाता है। बढ़िया है भाई, हैवान सही कर रहा है, पता है। माय टीम्स तो लास्ट ईयर गाइस आपको याद ही होगा इंडिया से 3 टीम रिप्रेजेंट करने गए थे। पहले टीम आर्यन, देन टीम टू रिपर्स एंड टीम ओरेंगुटैन। तो भाई मेरे को बस एक रिक्वेस्ट है ओजी एंड टीम गॉडलाइक से ईडब्ल्यूसी के लिए कि बहुत बढ़िया आप लोग क्वालिफाई करें। तो जब टीम आर्यन ईडब्ल्यूसी क्वालिफाई करी थी तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक करा था चैट, कि वहां पे जब आप ईडब्ल्यूसी खेलने जाते हो तब आपको ईडब्ल्यूसी वालों के तरफ से या पबजी वालों की तरफ से आपको एक जैकेट मिलता है बैलेंसियागा का, तो वो आप मुझे दे देना प्लीज ला के यार, मेरे को बहुत पसंद है वो वाला जैकेट। बाकी आप कैसा खेलो यार वो आप पे। सबके बाद इंटरनेशनल लॉबीज में बीजीएमआई टीम्स के लिए वो लोग एक नैरेटिव सेट कर लिए हैं। पहले ये चीज के बारे में रिसेंटली रिप्लाई करते हुए ओरेंगुटैन आतंकी एंड प्लेयर्स ये कहे इंडिया की टीम दोनों टीम्स ही अच्छा करें एंड जितना हो सके बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जो कि बाजी! सेट करके आई थी हमारी दोनों टीम सही हो जाए एंड जो इंडिया के लोग हैं उन सबको प्राउड फील करवा पाए हम। एंड पाजी ये टाइम मारने चाहिए भाई, कुछ हो ना हो, मुझे कुछ नहीं भाई, मुझे पाजी को देखना है, पूरा डोमिनेट करना चाहिए उधर, गाने बजने चाहिए भाई, गाने बजने चाहिए पंजाबी भाई। पाजी आपको मारना है, मारना है, कुछ भी हो जाए। और इस पे ही हमारा कंप्लीट फोकस है अभी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्लच गॉड के बारे स्पार्की में। देख, ओए तो लाला कल की भी आ वीडियो में गया गाइस हम भाई, लोग बात लाला आ किए गया थे क्लच गॉड मतलब की एक क्लिप के बारे में, कुछ जहां तो, पर लाला आ गया मतलब लाला ने कुछ तो लेम सा बोल रखा है पक्का। बात किए थे उनके वापस से आईजेलिंग करने के बारे में। जब काफी लोग उनके चैट में ये लिख रहे थे जो टाइम पर पास में आप आईजेल थे टीम की परफॉर्मेंस बढ़िया होती थी, जिस पर काइंड ऑफ क्लच गॉड ये गए थे कि अगर वापस से मैं आईजेल बनूंगा तो जब भी प्लेयर्स गलती कर देते हैं मेरे को वो चीज पर काफी गुस्सा आता है। तो ये चीज पर गाइस टीम मैड किंग्स स्पोर्ट्स के एक्स मेंबर नियो रिप्लाई करके ये अच्छी यार, तुम मेरे को कैसे ला देते बार बार, कहाँ से आ जा रहे ला ब्रो में ब्रा। फिर एक नियो रिप्लाई, फिर एक नियो, अगर ये तीसरा भी मेरा ही रहता तो फिर तो हैट्रिक हो जाता। नियो रिप्लाई भाई,
पैसे चाहिए मेरे को एडसेंस से, जितने वीडियो मेरे यूज हो रहे और गाइस नेक्स्ट अगर वीडियो बाकी तू मेरे से भी ले सकता है, निकल मैं भी कर तेरे आती है वीडियो जी देख कोड की करके। तरफ से वो बात की उनकी फैमिली के बारे में। तो गाइस बीएमपीएस में ग्रैंड फाइनल्स होने के पहले काफी लोग उनको ये बोल रहे थे कि अब 2 साल बाद अपने घर जाने वाले हो, वहां से एक व्लॉग रिकॉर्ड करना, बट ये चीज गाइस जी कोड नहीं कर पाए। फिर फाइनली आज लाइव स्ट्रीम पर रिप्लाई करते हुए वो ये कहते हैं 2 साल बाद घर पे गया था मैं, तो बहुत अच्छा लगा भाई, और मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया था, मेरा फोन वगैरह, मेरे को बस घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था, और इतना अच्छा लगा ना भाई मिलके, इतना बढ़िया। मतलब बहुत लड़कों की आदत रहती है कि यार घर वालों के लिए तो कमा रहे, घर नहीं जा पा रहे, ये कर रहे। मेरा भी वही थॉट प्रोसेस रहता है कि यार घर वालों के लिए तो बाहर निकले। मुझे रियलाइज हुआ कि घर जाना, वो मम्मी पापा की शक्ल देखना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इंसान कितना ज़्यादा रियलिटी में रहता है, कितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहता है, उसको कितना चीज़ों का पता रहता है कि नहीं यार मुझे लाइफ में करना है, इन लोगों के लिए करना है, भले ही कुछ हो ना हो, खुद का कुछ हो ना हो, बट मेरे पीछे कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कसम से बोल रहा हूँ, पूरा रीसेट हो गया मेरा ब्रेन। जैसे ही मैंने हक करा ना मम्मी को, खत्म, सब जीरो। तब व्लॉग वगैरह में बना नहीं पाया यार, घर पे थोड़ी सी बीटी चल रही थी, पापा थोड़े नहीं बहुत ज्यादा बीमार थे, मैंने बताया नहीं किसी को भी, तो घर पे वो सीन भी चल रहा था, इसलिए मैं आधा टाइम लैंड पे भी स्ट्रेस में ही था, क्योंकि मेरे को घर का भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था। अभी ठीक हो चुके हैं पापा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मिरामार के पिकार्डो में वो लफड़ा के बारे में, जो कि हमको देखने को मिलता है टीम रेवेनेंट एक्सपार्क एंड टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के बीच में। तो वो चीज का राउंड आज हेक्टर रिप्लाई करते हैं स्नैक्स गेमिंग की लाइव स्ट्रीम पर। आगे चलो पिकाडो जाएंगे। चलो 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 पिकाडो चलो। भाई एक्टर मैंने वॉच पार्टी के टाइम पे आखिरी दिन बोला कि और एक बार वो पिकाडो का क्लास देखना है, बट तुम लोगों ने नहीं दिखाया रे, मसाला नहीं दिया भाई। कोई ना आती है टूर्नामेंट में दिखेगा मसाला यार, बट वो क्या सिनेमा था ब्रो, अरे बाप रे, है ना, मजा। डेंजर मसला भाई। हमारी वॉच पार्टी में नहीं मिलेगा, ये सब इंडिया में मिलता है। अब तो मिलेगा ही भाई, इतने अच्छे भाई, अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर गया है पीक व्यूअरशिप बीजीएमआई का। तो मेरे हिसाब से अगली बार देंगे वापस देंगे वॉच पार्टी भाई, क्यों नहीं देंगे? ऐसा ठंडा करके गरम थोड़ी छोड़ देंगे, सॉरी गरम करके ठंडा थोड़ी छोड़ेंगे। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पर Let's start. Oh my god, yeah, man, started, just bro. doesn't have it on this map. Maybe that's why he's just trying to recover mentally from Hey, the कौन the खेल lack रही है of आज? hovercraft. आज भी Here we same go, team though, खेल with रही the है? playing path. Look, oh my OW goodness, physical so many वाली teams team going से। on to Yulin. This is a new record for this event. I don't know, it feels like it. You can have PSG, Nottingham Red Force, you can have the side of यूलिन किधर है भाई? यूलिन Aurora. And actually, as I'm talking दौड़ about तेरे बारे में Aurora, बात I कर, don't see a 3-1 split. Are they going to go यार for the बे, equal strat? I don't अभी think so. रेगनम कार्या है आज। Oh my कल gosh, रेगनम look कार्या how थोड़ी many थी। squads are over here. You got कौन सी Regnum टीम Karya, है? Ezel. अरोरा भी है, Squad there अरोरा from भी है। Coops ओए, getting चल, shot let's in the go। back. Too many angles to cover here. And he's like, why? That's what it takes there. You can see squads looking for some loot as well. This is when you, especially with Rondo, you have to make sure that whoever's flying the squad, or if y'all are flying individually, you have to have the perfect drop timing here. Yeah, you got to be very cautious here of how you're going to be pulling it out. Well, especially they're all going to test track नीचे क्या itself. They're not going दिखता for the रहता Neox area. कि छोटा है कि बड़ा है। Most of the players are going to be on the western side, so trying to maybe avoid that area. They didn't want to go for too big of a stretch in the parachute. Oh, Silas camping the angle into Narvalo with a JS9. That's an instant punish play. Still, it might not be the end of the line. They could still go for the recall later on. ये तो गोटेड है Silas, we ये ले saw his भाई, ये तो clutches कहाँ से भी the other देख day with the सकते हैं। P90. He's going to try and repeat it here with another weapon. Is going to be the Or JS9 dick, specific but- weapon on Rondo. Dick, And Silas is just too dick, damn dick. good. Takes him down once again. That's the end for देखो Satan. भाई, क्या मारा Enigma है Galaxy भाई, getting Silas swept तो पूरा under crack the दे rug. रही है। Silas Shit। is just built different Ayala! for PMMI. मार भी 1v2 there. Oh, Coops out in the Oh, no. open! Turning on Chief on, there. bhai. Coops is on fire right now. That looks like it could be 3 eliminations. Silas तो बहुत We'll see if goated है his भाई। teammate's going to be able to res Silas him, and though. करियो But Coops with a beautiful हर start. जीसी को And the क्वालीफाई, rest of हर his team जीसी is को already लगा था 3 या picked 4 back जीसी up. क्वालीफाई Now करेगा। he's got the shotgun. Oh, yeah. He wants some of नॉन that जीरो Silas प्लेयर है action. साइलस। Ooh, Get revenge now, on his अभी team. नहीं Silas रे। 1v3? Or will Yes. Coops get his vengeance? he's going to do it again. He's just going to camp the Sneaky. corner, Silas. Oh, Sneaky. it worked out for him so many times. Oh, no, he's peeking. Uh-oh, Coops has got the info. hello. Here's the shot. Trying to go for the big spray. He gets some damage done, but he's going to get punished. That's it. Coops will punish it down and will get himself his 3rd elimination of the game. So, yeah, he tried it once. It worked early on Navallo, but Silas, 2 tricks will not work जारो twice in a ड्रिपिंग row. करे वही तो Laying बोला white भाई। out in the open अबे and with घंटा भाई। third person नॉन perspective. जारो तो घंटा रहेगा नॉन जारो। चल Coop said, you know, what's that? Oh, what's that laying down? You know, ये nice अजय play there though from Coops. China Playing में nice and अजय। slow, making it work out. Got the revenge. प्योर है for his अजय, team. प्योर है Oh, अजय। AJ, shotgun action, Thunder Talk here to AJ play. भाई प्योर। KSG in last प्योर। place, need to win this fight. Let's see if this nade's gonna do it. Looks good. Oh, just a little short. Oh, what happened? I think that was the auto loot right there. He भाई went down to pick up an भाई यार item, बाहर लेते हो ना थोड़ा गलत but कर he गया still यार। ends up getting the कीपैड पे knock. खेलता है वो। अबे 2 पैर से खेलता है, हाथ से थोड़ी Don't worry, खेलता है he's वो। still got Refus over there in the distance. दो नीचे के Doc थंब did थंब प्लेयर है go वो। for the recall. दो So पैर he's के going थंब to से try and get खेलता his है। teammates back up.
Jing doing some Gyro great से work हिलाता here है. with the S12K. Good movement tech. Looking to find himself KSG. KSG down to 2 players here, so want to make sure he don't lose it, but he does take the L. Jing once again up to 3 eliminations for the entirety of their squad. AJ was indeed taken out, but it doesn't matter. It's still a win, especially when the recall towers are still available on phase 1 on Non-gyro Rondo. तो And this fight भी got था. a little bit hectic, got a little bit messy, even you could say, but it's going to be the backstab play unfolding, and And I'm that's going to be a talking about nice Silas. elimination Top, secured top, by top, Tizzy top, top. from Longsham Red Force. See what Top can do. That The is nade! good. Gets one. Oh, and a Molotov to follow up. Beautifully done. Top's on fire. That's it. It's the top way. Maybe he might just get 26 eliminations, just like in Doc's story. The nade, though, inbound, getting some good tickle damage onto top, putting him down to 2/3 HP. As Sunan, we saw what this guy could do. Any kind of range. But top is quick. He's mobile. He's hard to lock down. As Sunan trying to make it over to his teammates of K1. The top, he knows exactly what's happening. He's read right through that play. And he's looking to convert another one. Goes for the shot right through the smoke. He gets 2 bullets to connect. Almost gets a 1v3. As the nade is getting pinned out. Doesn't get it from his teammate. He sends it forward in CQC. And Top gets a 1v3. Can he get the entire squad? क्या खेलता है भाई ये? Top. Top is in these players' heads. Like, perfect movement. He knew exactly क्या खेला है भाई उसने? क्या IQ के That साथ is खेला how you है? do it. Now you got Solus popping one out the vehicle, but Schweppes right there. Top to का help out game his teammate. चले Great teamwork there from baby. E-Arena did ये so गाना तो good इसके लिए on बना their है day भाई. 1, and they're looking solid here on day 2. ना ना With 4 इससे eliminations, getting their whole इससे squad बड़ा back प्लेयर up. नहीं है भाई कोई. Top. Great start for E-Arena, but man, कितने Top's सालों looking से good भाई? today, 4 folks. साल से dominate कर रहा Yeah, है. by the way, भाई Zez did get the full recall onto K1, so I was wondering what the 4 final साल player से. was, but he was not inside of Real Yulin, MVP, so that's the not going to real be a top striker, 1v4 भाई. from top. I'm sure he could have, I'm sure he could have gone the entire way and got himself those 4 piece तुमने उसका game eliminations, sense देखा? but nope. He was not जब able भी to सामने find नेड that पिन हो रहा था, really game cool sense देखा player, कैसे वो but it's मार gonna रहा be था, way fall back further कर रहा था, away मार from रहा था, fall Yulin back itself. कर रहा था. But yeah, E-Arena, really, as you said, I'm really happy with this team. I expected way more going into PMGO Season 1, just the entirety of this year जब so भी नेड far. पिन हुआ कैसे उसे fall They've back got so किया. many big names on that team. Like Mormon in Yeah. particular and Pura sound Schweppes. sense, Those two proper guys are cover, amazing. proper fall And then you back. have Tony K. We don't have Tony K. We've got Tony K at home. Tony K. We got Tony K. Yes, yes, And Tony K has also been doing some fantastic stuff. We saw, especially during the Asian Games, I was loving what this team was bringing to the table. Of course, that tournament was a little bit different because it was a 12-team lobby, But like- not a 16-team lobby. But they've built a lot of momentum, and I Yeah, feel the like they stats really speak. are showing Stats that के ऊपर बात Thailand करेंगे is ना, अपन back stats here के ऊपर. in PUBG Mobile Esports ever since. Fair to say, Eldrukes Vampire have fumbled the bag massively in the past 2 years. Man, E-Arena, they took that torch and they are sprinting Johnny or down Dog, with choose it. one. एक choose Yeah, I करो. agree. I mean, I was going to say the same exact चलो thing. ये Thailand चीज is अब looking great here मैं तो because, इसका आंसर दे दूंगा. the आप Vampire got a very large bag. खुद से होके बताओ चलो. Since then, Johnny or Dog. we आप haven't खुद से seen होके much बताओ from चलो. them, मेरे को क्या पूछ but के it's मेरे को great कोई to आप see tricky E-Arena situation में डाल के coming या out कोई strong मसाला here create in करने का. such a आप कुछ लोग insane होते थे lobby मेजर जो as well. मसाला I create. mean, Johnny or all Dog, these आप ही teams बता दो चलो. top to bottom are not messing around here. I'm expecting an Erangel, 15, 20 minutes in, we're going to see like 60 remaining. I mean, Okay. it's not an easy lobby. So the fact that you're able to put up so many points shows that you are here to stay. But now things are going to start to slow down a little bit as the hot drops have calmed down. How many? भाई मेरा eliminations did favorite we see player already? है. Probably a whole bunch. We can't see on मेरा the right favorite side of player the है भाई screen, Sims. it's only Yeah. points. But it's probably like, we're getting close to 20, I would guess. A 20, lot. 25, maybe 30 even. Look, another elimination found onto Satan. That was his second time he got eliminated. Earlier was to the hands of Silas. Now it's going to be Loxy. So Satan, he's out for the entirety of इनका this क्या चल game. रहा है? Midnight Regnum Galaxy कार्य not का. going to be a full squad anymore this match. Rank. So they've got to be very cautious. किधर But good Regnum? position from Regnum, right? Aris- Using the bridge. Aris- These bridges are Aris- very weird because they just Regnum so, पे भी they कुछ are last so time पे high. इतना So they perform actually नहीं कर decent पाए hiding भाई. spot. That's only on Rondo, of course. And as we see this, the elimination feed did light up a little bit. Furia did also take a bit of an L. So let's see if they can go for a quick recall on their 4th member. अलग ही लेवल का बंदा था वो. Random अलग ही Karya, लेवल का dude, बंदा looking to था. pull out some kind of sneaky strategies here so far. I mean, you see them भाई positioning their future vehicles, old- hiding them. They're kind of trying to yeah, play this, yeah, like, silent assassins, and it's working, right? Derek's का Just नाम hold the Chang position, है. don't make any noise, Okay, don't let Alex. anybody know you're Yeah. there, and catch these players out when they're trying to scout. Paul, I'm not talking So, about we saw Silas start to do fans, that by the way, early chat. on, and now the rest of his team. Fans seems के to be बारे में बात following. नहीं करेंगे So किसका ज़्यादा fan base है वो तो yeah, बहुत ज़्यादा evident KSG है have a long way to कि go Johnny का here.
Had Four a limbs. very, very rough day one. Fan base. Yeah, but 4 limbs. I mean, that's almost PUBG में half सबसे their ज़्यादा performance from day one. So a great start. More than half, actually, because they got Yeah, 6 you're points total in 6 games I yesterday. understand, So no, भाई, they're इधर already तो सारे outdoing their नीचे initial चल रहे हैं। performance. WBG क्या है? WBG It would है, need WBG so 15 much चल more, रही है। though, for them to qualify, right? You would need to hit 15 pretty मतलब 40 consistently, 40 का 10 कट points ऑफ per चल रहा है game, if अभी। not more. I'd love to see like a 12 if you want to comfortably make in top 15. With Yeah. the caliber of gameplay we saw on that opening day, I'm really not expecting it. This is the team that would need to completely upset all expectations today if they do want to reach the PMMI finals. I just don't see it happening, though. What I do see happening is Rauf Lala. his vehicle in his own face. Rauf Not sure Lala. how that went down, Nice. but fair to say, that's not what you want to do. That's not how you play the game. यार खाना खाते गाइस आपको ऐसा होता है क्या? राइस खाते ही नींद आ जाता है? Sometimes towards the end game, you want to blow up that vehicle, but knocking yourself while doing it is usually not a good idea, especially early game. यार मेटा But who knows, शॉटगन मेटा right? टॉप। We've seen crazier strategies yesterday, Max. We did see some. Yesterday was such a weird day, Jukes. Yesterday The was wild. circles were like, you know what? Paul as Screw who you is guys. best I hate player, everyone. not your Bonk, on the bridge. Okay, thank you. He's like, all right. Oh, all right. That's what all the players were saying once they saw this. WBG So like, I guess 15th we're just gonna have to figure it आज out. लास्ट डे आज पता चलेगा कि कौन फाइनल्स जा रहा है। Oh, तो Razy तीन with दिन में the with finals the. What's going on? What is happening? I don't know, man. Alula looking to WBG repeat their Suki first day's rondo. सूकी नाम क्यों रखा है इसने? Catching Schweppes. अबे सूकी अलग और सुक अलग है। Thirst as well, but I believe that's Schweppes' first time eliminated. ये कौन से नए प्लेयर्स आ गए भाई? Should be able to सूकी get a res on him. सुक I बे believe so, yeah. 33 Yeah, जी तो था। meanwhile, yeah, every team is just right now just Suki trying कौन to सा find a player है good बे? central position in this next circle and waiting for it to pop. It's Oh, still same so time, early. I right? love Rondo. I love starting with Rondo because it's just so hectic Pull up off the कर रहे हैं rip. लोग Yeah, influencer it's like influencer। insane hot drops, then it calms down, fizzles out a little bit, and then it picks back up later on when you get to around circle 4 or 5. But oh, be careful here, Weber. Yeah, can bag- get yeah, really bag- close to bag- the yeah. influence My range. tires! Brazilian compound, yeah, loses one tire. It's a buggy though, can still maintain some control if it's the back tire. When it's the front tire, then Order it's a करेगा, bit more order- dicey order तो to नहीं maintain है। control of that beast. But no, influence rage will be good to go. Not a ROG big fan of Warriors this with compound double actually, SUV. because if teams are positioned all around you, it's really hard to go for a quick exit. It reminds me of the compound next to Alamo on the Wrangle. It's also hard to hide your paths properly. So influence rage, I hope that if they have to rotate, they can do it very quickly as to not get punished. As Weber though, going into another compound, but this time it's going to be Nigma Galaxy, which we know as a fact here, Hot Chooks, do not have a full squad. Here it's Coops and Novalo. ये left pick है। Navarro holding the angle. Oh, he Left got pick वाला बहुत tough caught. होता They है। found him. Right pick पे Yeah, now he's gonna back off. That sneaky play not working out. I love like when any team crashes a spot like this, the paranoia is like at an all-time high. Every single angle, you just gotta kind of wait. You can't just run अबे into a pinned building है भाई blindly. WBG पीछे रग्नम कार्य है So, आगे। I like the fact that you know, Nigma Galaxy are just backing off here. Just yeah, they know where you're at. The element of surprise is gone. Just share Rangers this. के comp. दो ही बंदे इनको ले लेना That's चाहिए। it. I mean, इनको Narvalo, good भाई आपको क्या response, लगता है जॉन? right? Smoke road over the side, making sure you avoid that confrontation with Goblin the or likes of Weibo top? ये बताओ। is the way to Goblin do it or when you top? don't have the numbers to back a play like this. So this time, yeah, even going for the vehicle here on the Wrong roadster question. and just trying to get Wrong the hell question. out of dodge. Wait. Bonavalo, got to be careful. Oh yeah, if he goes on the left there, that Wrong could have been a question. really good angle for Sook with the Org and JS9 Wombo combo. Goblin or Sensi? Things ये that बताओ। you said right Goblin now, or slowed down Sensi? quite a bit. Teams Chilling. looking for the entry point. Teams that are still not in a circle, by the way. It's going to be Ulf, it's going to be Aurora, and also the side of E-Arena up north. Though E-Arena's got a pretty damn easy entry point up north in the Goblin or circle. Sensi? And Aurora have a 3-1 split. Doc is actually in the play Yeah, zone. and man, he's got I about know. maybe 300 meters I around him know. where there's literally मेरे को no पता था teams क्या answer nearby. होता So है। Aurora also should have a decent entry point. Ulf is the one that truly is going to be tested. Sensi on the circle great 3. wood शेर। ए भाई Yeah, यार they're ये gonna क्या नाम be दे रखा है बे creeping तुम लोगों ने? right Sensi को here ऐसा on क्यों? Nongshim Red Force. Tizzy is just holding that angle, waiting for him. Catch. Meanwhile, looks like he's gonna find a place to stay here near K1. Kiwi power 24 hour. thoughts. Yeah man. This ये is किसने right नाम on दे the रखा edge है of भाई circle, Sensi though. को? Not really the best spot, but as long as you're in zone, you gotta take what you can get. Check. I like the scouting, right? Just send one play up north, catch, You trying to know, get some intel, sees Dadaji. K1, ooh, bit of a tougher entry point. But they are in circle, so technically there's no rush, but they're trying to get some intel to prepare for their next rotation on circle 4. क्या Which is why, like, I just love But the वो तो IGN Sensi style बोल of रहा था Ulf भाई and Ketch in आज particular, अब where तो और they're मारने का just मन भी always नहीं looking करता। ahead of the game. What are we going to do in the future? If this गलत first नाम step दे works रखा है यार out, what are we तुमने going to do उसको। right after that? So this step works out, they go on the edge.
And now we'll see if they can actually get a good amount of real estate in this next upcoming circle. So It's a good idea. Fight, though, Influence Rage taking a bit of an L there. Actually, no, sorry, dealing a bit of an L as they do find BTR from the range. Yeah, it's a good idea. China की team Wolf, because sometimes you gotta just take what China you can की get. team A lot of इतने teams सारे get Chinese greedy team and है they try to push a central position and get Chat lose कोने players on the way in. KSG Instead, he's like, you know what? Let's just hold this edge, get looted up, see where this next zone goes, and then we'll make some plays. versus The next top. zone does pop, 'cause I gotta have my map feed catch ये up आपने here to see tough exactly question where पूछ that लिया went, भाई. but it does look Suk like it goes versus up top. north on the mini map, and Influence Rage are gonna be immediately joining up with the rest of their squad. Lorenzen and Federal. Yes, so Our they are teams going to be holding this broken wall Wait, area. WBG got Actually, center में- Pedrino अरे, gonna अरे, say, अरे. let's get up a little bit closer here. As now they're going to be holding this bridge. अच्छा Careful, position though, पकड़ा है. teams do see that rotate, especially WBG Redmond, maybe प्यारा trying to zone take है a भाई, few quick to be shots, honest. but Ulf going to be fighting straight up with Al-Ula. It's going to be quick and claws to get so much damage done, pretty much just decimating the entirety of Ulf. So Turkey here struggling. Even Nigma Galaxy Coop's going for a cheeky third party from a distance. And yeah, that's it. Ulf, you blink and you missed it. That team got fully squad wiped in a matter of, what was that, 10, 15 seconds, Hot Jukes? Instantly taken out. That was literally what I just said. I was like, sometimes teams Suk get a as little a greedy IGL top and just fragger go for रहता a है, central तो- position and get destroyed. That's exactly what happened. But hey, you know what? That's Now's the more time. tough. Let's risk it. And teams were ready for them. So, Action unfortunate. गायब हो रखा है ना? Loxy, ooh, getting beat up here. तो Loxy तो गया है. Great utility use from KRX. One good aid. Ooh, this wall though is helping him out big time. Ooh, Nice jump down here. Oh! अरे The भाई. shotgun, but getting shot in the back. Not able to put in the work that he wanted to. Yeah, I mean, I like the idea of trying to go on the roof, but the thing is, in that position, you've got so many teams looking in your direction. Nigma Galaxy, you got Reggie, you got Weibo, you got Al-Ula. Any position you think is safe when you're surrounded by so many squads, it's just not going to work out, and KRX take it home for free, pretty much. Hoxie does get one elimination, but Nongshim now going to have to go for their own breach. This circle is just terrible for the side of the Red Force squad. And chances are they're going to have to go for a breach of some kind here, Hot Shoots. And I would say going on to KRX's building would not be a bad option. Because all the options they have to fight regardless, so the better one might just be to go for the one that's closest to you. They are going to go for a little bit of a wider northern, western rotate. As E-Arena now clashing with Thundertalk from China, and Awake just not ready to take that heat. He's trying to get the hell out of there, and he's literally left on a slither of HP trying to make his way back to Jing. That was way too close for comfort. Way too close for ये वाले comfort. का यही होता है कि जब भी चालू होते हैं ना just तो ये sneaking away there. तेरे The Arena setting up as a squad. Turney K putting that pressure. 6 eliminations for the team. They're on the north side here in a very dominant position. Meanwhile, Bigatron have been eliminated. That's going to be the team in 15th place out of here. 47 players remaining at 46. Mormon, look at that. I mean, E-Arena having their way with this north side. Furia just trying to get away unscathed. But it's not an easy one. Oh, and now Mormon smoking it out, just saying, hey, don't even look in this direction. Ayala तो जब मैं खेलता था तब खेलता था Ayala. Of a banger game for Thailand. Loving the game so far. For them, KSG though, going to have a little bit of a push up on their location. It's going to be Nongshim Red Force though. They don't commit fully to the building, meaning they have the perfect angle to just deny that push, that entry point, and get a bunch of eliminations in the process. XZY going to be the sole survivor here for the South Korean team. With the cars in a very dire shape, I would say. This is not looking too good. I feel like this is going to be kind of a non-game for Nongshim. A circle about to shift. Come on, go towards Nigma Galaxy and Weibo. That would be such a great circle. China में compete करता है भाई. And way to work around, and it does go over there. And keep in mind, over to the eastern side, we still have the presence of Aurora Gaming. Everyone's अब तुम्हें पता चल जाएगा. अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना सुक और these guys are looking to finally get a chicken dinner here. वही एक मैच पे जज नहीं कर सकते. I got some crazy news, but we'll talk about it right now. Personally मेरे को सुक पसंद है भाई. अब देखो दोनों पे सोन है. Let's see. अब देखना पड़ेगा अपने को एंड तक कि कौन doing some ring around the rosy PMCO here, just जीतेगा kind ये of सर. teasing Alula. Oh, going for the run over. Switches vehicles, and KSG gets the better of Alula here. And they're going to take this little dip, and it is a nice Prime one. candidate. Not in the next Prime zone, dog though. भी बहुत The rest of the team of Alula are going to be moving away crazy from था this भाई. one. And the shots are ringing out all over the place. Look at E-Arena. Nice nade there onto Ayala. Igor trying to do something. Got the shotgun, but Schwab shuts that down immediately. एक बार शुरू है तो ये And that रुकते नहीं is है भाई. E-Arena with 10 eliminations so far. Looking to stack up more. These guys are on fire. Mormon barely making it behind that tree in time.
The rest of his team's going to be looking to support him immediately. Yeah, they were trying to do something, but they couldn't do anything against the incoming force of Arena. But now the other team has to go on the offensive, not on the defensive anymore. And they're going to go straight onto KSG. The target is painted right on their back. The Joker going a little bit solo here. Better wait for your backup if you want to go fully into this engagement. Tianyu going to get punished as he peeks out over that ridge line. Is that even a question, Get bro? the hell out of dodge if he can. Just to get even just a few placement points. He's got 8 eliminations. This is definitely a way better performance from what we saw on their opening day. But E-Arena doesn't take any prisoners. If they see you, they will take you down and instantly create so much more space and a decent entry point for themselves in that zone. Yeah, Mormon already had that vehicle pointed in the right direction of exactly where he needed to go. You know the emote? Now KSG What a is trying spam! to find a way to get some shots on them as 5,000 like KSG नहीं हो रहे are outside of the बैंड circle. के KSG looking to hunt जल्दी down like some मारो, eliminations subscribe करो. first, but they do need to find a way in, and you can see him looking. All right, where are we going to head? That broken wall right there? That might have to be the strategy. It's going to be a tough push for these two players, though. Hey, 8 eliminations, though. That's what it's all about. I mean, they have a lot more left to go. They've already passed their day one. कोने में दे प्योर 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 में ले लिया प्योर में ले लिया प्योर में ले लिया बस कोई ना प्योर ले लिया हमारे टाइम पे तो ऐसे ही था भाई अपना अपना प्योर निकालो जो हगा उसको sure they do have one player that gets kind of put through the meat grinder, but eventually they do get the meat full grinder reset onto Mormon, hopefully. Oh no, that blue zone is going to take really hard now. You're about to get into phase number 6. Sorry, brother. Now give it up. It's not worth it. You will lose your entire team if you try and get that reset. So just give it up, especially when KSG still has 2 players looking your direction. Same for the likes of Alula. So you got to try and put focus on the overall bigger picture of this game, not just trying to get your homie back up on his 2 feet. And he does get taken out because of the blue. Schweppes, Tony K, can they make it in? There's a few Rosemary they can as work a behind, IGL but again, ऐसा there's so many मारता है. teams looking in their overall direction. Hot Jukes, this is just not Rosemary going to as work a out. IGL Schweppes taken on out now. It's Tony K against the world. KSG have been just staring at E-Arena this entire time, looking भाई to इधर तुम sneak some of these पांचवें जोन में eliminations. 27 Especially टीम considering that बची you're है a two-man, चैट that's the right आप play. देख रहे हो पांचवें जोन में Right, you need all 27 the टीम points बची you can कितना get, फाइट लेते हैं especially where they're ये at इंडिया with रहती तो reports. If you can 45 catch a player out in the open, that's the way to do it. Next Ore zone goes up to the north side. Weibo looking dead center. Enigma Galaxy, this compound, they have been locked in it, and it works out for both of them. I do have some news, though, Max. Magnum Karia got 1 point. Thunder Talk got 3. ये अगर इंडिया रहता तो कितने बंदे अलाइव रहते बताओ ये. Oh, I was thinking that's going to be the news, but yeah, guys, officially Alpha 7 are eliminated from PMMI 2026. And Yangon Galacticos, I'll have to recalculate exactly. I didn't check it now, but it also might be looking pretty bad for them after Alpha this 7 game. फिर एलिमिनेट हो गई. Alpha 7 मतलब इसके पहले कौन सा था? Yeah, it's a lot of points from a lot of the teams that were not in the top 15. So that is not looking good for those 2 world-class champions of 2025, which will not be the case for this year, apparently. As Alula now going to get rained upon with that utility. As Chum, okay, no, I was going to say Chum, that's Thunder Talk fighting Aurora. And I was going to say, this is not an easy entry point. They have to go on the aggressive side of things, and they do just that onto Thunder Talk, looking to get to the double-digit elimination point threshold of this game. This is the Aurora you just love to see, Hot Jukes, and here, with that kind of momentum, I would not be shocked if they get a 20 elimination bomb here with a chicken dinner on the opening game of today. Oh my gosh, we saw it on social media. These guys were locked in, ready to go, and it is proven true. Quick, absolutely on fire here, and that is it for him. Meanwhile, Lula, nice little peeks there. Yes, sir. क्या भाई he's on utility fire. usage है The भाई. Molotovs that you use to क्या utility. utility You know what? usage If you're on fire, jump in the river. He's on fire in the water. Doesn't make any sense. How's it possible? It should turn off. It should, right? Yeah, but because he was walking, I think it didn't work out exactly. But no, he's going to try and find himself that one player getting backstabbed, forced into a fight he just doesn't want to take, and that is going to be it. Game over for them. Al-Ula still going to get a few points this game, making it over to the top 7, so that's still going to be an extra YG and A7 both elimination. elimination. Top 6. YG का देखो, to be honest, A7 जितना consistent है international circuit में, they were 9th position YG का मेरे को ऐसा लगता है कि भाई now they're up in 10th. They're 2 जीते, points no doubt, behind. अच्छी बात है, Al-Ula, जीते. 3 points behind the likes of Influence Rage and E-Arena. Chances are Aurora could be in the top 5 if they do secure a massive game here on Rondo. They already have. I mean, and now they could just make it a monster game. वो लोग right? H game player उनका पूरा With just a hardship few उनको H पे ही आ रहा था more बार teams बार. eliminated. Aurora, I believe in just this game alone, have punched their ticket to the finals officially.
So let's see how they're going to be able to continue here. They're looking so strong. They have the entire back against them. Nobody's behind them, so they are set up for this match. The big difficulty is going to see where this next zone is going to go. Oh, nice shot there on the Doc from Bay. वही तुम A7 को देखो तो A7 And Doc is all by his lonesome. I think they were doing a crazy सब कुछ एक बार जीत चुके हैं. The dockening. Yeah. The dockening. Nah, I get it, right? They're trying to keep their options open with the next circle because they don't know if they're going to stay on the northern side of that road side or if they have to go back down south of the road. Why? I get it, but yeah, when you have only trees to hide behind, Hot Tricks, it's not always going to work out. They've still got 3 players, so you know what? It might still work out. The Weibo, what a step up. They started off the day in 18th position, and now they're up in 13th and could climb even higher. Man, this is so good to see Suk and the boys get performances like this in PMMI. I'm so happy to see it. But you asked me which team down there I thought was going to be able to do it. I said Weibo, and they came out in Rondo and said, Jukes, we got you, man. We're going to make it happen here. And they did, right? They picked this position nice and early. A7 is too consistent before decided, GC, split it back with then Enigma A7 is very Galaxy. consistent. Or Enigma Galaxy said, you guys can have it. We're out of here. Always. हाँ भाई. And A7 because of that, the zone locking on this spot works out perfectly for them. Like करो भाई. Let's just see Like where करो this- guys. okay, 5 next likes circle actually does lock onto them. So now Weibo posed to win this game perfectly. Goat, meanwhile, we haven't really talked about them. Full squad up, only 2 eliminations. Goat. Gonna need to do more here if they want to have a chance at the finals. I like this a lot play. more. Jonathan scout का lineup है क्या ये दोनों ने मिलके खोला है? Going for your own rotation, that is the best way to do it. Just try and carve out a position in the zone for yourself. But the one that's going to go on the aggressive scout play, trying to get in CQC range off top, it seems, trying to get a little bit of an angle, dipping out in the blue too, but the rest of the team's going to follow onto him. He tries to get top, but he dodges it. Toro doesn't quite get that one for himself, and it's going to be forced to drop first in the fight. Goat team now getting picked up one by one, but Top will suffer a similar fate. Goat is down to Moxie and Focus. Can they secure the entire win as it's Yol in a 1v2? He's got the nade being cooked up. He's got 2 pieces of utility. He confirms his teammate, but does take one. It was a necessary sacrifice to take down Top. And now Moxie also cooking that nade. He gets a good chuck, and that will be game over. Aurora sent right back to the graveyard, and Goat team getting a successful rotation in the process. Successful rotation. But man, that one hurt. They're down to 1 person left, but they do end up getting now you understand some elimination points. Sukkot Doc. Stolen? I think totally possible. Possibly, yeah. Yeah, I think Weibo ended up taking some of those. Oh, rough for Goat. Considering that, Goat, KSG today, for them to make it to the finals, they've wasted every bad What's your match opinion on Zigo they statement need only a happy good for game Amaranth all Trophy? 6 matches. वो तो आपको ही पता है वो क्या बोलना चाहता था. That's going to be tough considering just हमको how ही पता है. well these other बोलने teams in की the lobby जरूरत are नहीं है. doing. Now Weibo said, all right, Enigma Galaxy, it's time to pay the rent. Let's get it going here. 4v2 and Souk now at the 4v1. Well, okay, got to be careful to not nade your teammates again. We know it happened earlier for Ziol onto top because he needed to, but this one is definitely a bit risky. Luckily enough, it doesn't go down. Crips have the pan in hand for A7 is plays like classic right in their face. But with all the nades they have, yeah, they just if they eliminate Crips here, even get rid of Binny from KRX, this is pretty much game over. I do not see how Weibo could not win this game. जो है वो यही पेलता रहता है फिर. इंडिया में लेजिट भाई पहले के टाइम पे था डोमिनेशन नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टीम का. Trying to get himself that final elimination. I think they हर दूसरे टूर्नामेंट में कोई एक नई टीम जीतती है. or something. So like we really want to get वो that. एरा जो रहता है, डोमिनेशन जो रहता है, वो बन क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि कोई कंसिस्टेंट लगातार 2-3 टूर्नामेंट जीत रही है. Souk knows where he's at now. Yeah, now he's gonna. Does he have any more detail? He doesn't. He's just making sure he's not up on top here. Nope, cleared out. He's like, where is he? इंडिया होती तो एक दो टीम का 10 प्लस 15-15 किलो तो बाकी के पूरे idea exactly where he's at. One piece यहाँ पे सब मारे, देखो that should do सब it. मारते. Now he's on fire. इंडिया में Oh, it's blue zone. Blue zone. Oh! And he gets Souk. Wow. So Enigma Galaxy Coops able to steal a point away there. He'll take that. And now it's Goat Moxie versus the world. I'm surprised they were so willing to 2024 go for that one TX single elimination. They could have traded out. Of course, he did have the backpack that could deny a bit of boost and damage, but
They really wanted एक Coops. साल Maybe का got बात कर रहे drama हैं, right chat. there. We just don't know of. They really wanted to get rid of that Benny. one solo Enigma वो Galaxy एक player. But yeah, Benny has एक been year में just TX से surviving as a dominate solo करा for था. the longest time, है ना? Hot Jukes, and he does have at least मैं one बात कर रहा हूँ grenade in his 2-3 arsenal. साल You can किसी see ने he's ready to dominate pull करा. the pin. फिर So the moment Weibo दबदबा forced to रहता है. push एसन ने outside, 2-3 साल if he dominate gets the करा knock, वहाँ पे. man, maybe this is the अभी chicken तक dinner करते आ just रहे ब्राजील slipping को right through dominate the वो लोग fingers of अपने Weibo. region को. And you know the GOAT are ready जैसे to अरोरा defend पूरा their साउथ position ईस्ट till the एशिया. East. I say they, it's him, अरोरा it's हो only गई. Moxie. फोर्थ Without the ड्राइव यही hovercraft, डोमिनेट it's a करते हैं बस. 1v1v3. इनके अलावा कोई है ही नहीं. Weibo और team को. cannot afford to fumble this finish. Yeah, Moxie needs to win this for his squad. He needs to find a way to make it happen. You can see him throwing some nades, possibly. Lobby is too hard in Indian. Yeah, right now he's actually making a little bit of a path on the way into this उसका कोई circle. up to the He's mark making ही little नहीं dips हुआ है with those कि nades. बस वही one Suki, sided though, मार रहे. इंडिया में has ये some सीन है. angles. There's the smoke. They know exactly where he is. Bay's running wide out in the open. तुम ये here देखो ना now. सुक कब का बंदा है भाई. सुक No util though. No 2019 का nades. Nothing. 2019 He's का gonna have to player get है. it done. अभी तक with that इंटरनेशनल only क्वालीफाई 10 करके आता shots है. in it. ये होता है ना डोमिनेशन. See what Moxie can do. Come on with the JS9 in the open. He spotted, does get himself actually one knock on Ah, today. Suko But the in the angle on the chat roof ho will be jayega, enough. boys. Weibo finally secured Suko himself in the that chat. chicken dinner. And they were in 18th position before this game, Hodgix. They needed a massive performance Suko in just the to chat ho kind of jayega, boys. cruise through the rest of today. And they did just that on the opening game on Rondo. What a performance. And one thing that I would say really secured this game for them, Hodgix, is being willing to coexist with the two players of Enigma Galaxy, defend that position as basically a six-man team, and then you're just cruising it out for that chicken dinner. What a game from Weibo. Again, you're reigning champions from last year in PMHI, and they're looking to do it again here in PMMI. See, that's the right Divine is decision, going you know, doing a good. lot of Divine, teams, हाँ, I Divine think, अच्छा get कर a रही little है. bit too antsy when Divine it अच्छा comes कर रही है, to to be trying honest. to share a Divine का तुम बोल सकते हो कि compound with Divine another is the squad, right? only, They maybe just see only them, they're like, no, we got to consistent push this team. immediately. Then they get third क्योंकि party and Divine everybody's अब out. But एक if दो you बीच do में exactly tournament that, left right just, over hey, उसके you अलावा guys take that side, we लोग take जीते this एक में side, second आए we ये look in वो. this direction, y'all look that way, we'll defend this compound. And क्या then होगा अगर once इंडियन टीम the अच्छा final नहीं circle खेलते happens, इतना we'll fight मेहनत it करने के out बाद and see who इंटरनेशनल wins, खेलने right? के बाद That's the right strategy. भाई And खाना लेके Weibo आया. executed मसाला that to दिखाओ, perfection मसाला दिखाओ. here. स्पार्की As का we look देखने at बोले थे कुछ तुम लोग आके Bay देख being रहे हो. the ओए MVP भाई, for this Bay. match. 5 eliminations, जर्सी 41% कितना team प्यारा है यार. contribution. This guy वो popped अच्छा है. off. Almost 1,000 damage too. Damn, really impressive start from Weibo. And I really like what Bay was doing. This game, he was not really fully aggro. Like, sure, he got 5 eliminations, so he was definitely being aggressive. But he was finding some very interesting original angles that I just like, oh wow, he's actually can see them from that position. And he just subverts a lot of expectations by doing so. So I'm really happy with the way Bay was playing out these games as we go through the highlights of this game. And Silas really just... It worked out once onto Novalo, and Coops was like, I know your tricks, magician. And he did take him down eventually. So GG's well played there. Oh man, this Darko from top looking so good, man. Showing off the skills. And a great game from Aurora as well, elimination-wise, right? They weren't able to hold off against GOAT there towards the end. But regardless, I think Aurora are here to play. So many of these teams are locked in here in the final day, Max. Yeah, so many teams really just so desperate to make it up in top 15. Ula had a really good try here, really good position under the bridge, but unfortunately, there were too many angles looking in their direction, so he was forced to take that final fight onto KSG, and it just did not pan out as expected. Still, really good attempt from Alula. They got a few points on the western side. It was really good to see, but the winners... चीज थी जहाँ पर ये बोला गया था कि जो टाइम पर टीम हाइड्रा एंड टीम गोल्ड लाइक के मेंबर्स के ग्रुप गेम्स हुए थे, वहाँ पर कुछ मेंबर्स को इनवाइट कि वीजा कंफर्म होते टीम के प्लेयर्स के बारे में किए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारा न्यूज़ के बारे में, रिप्लाईज वगैरह है एंड कुछ फनी मोमेंट्स, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल पर जो नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अभी पहले यहाँ पे बात करते हैं। आपको मैंने बताया था मकाओ इन्विटेशनल चल रहा था जिसका कल डे 2 हुआ था। स्टैंडिंग्स मैंने दिखाया था मेरे चैनल में। यहाँ पे अल्फा 7 ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनका सारा मैच हो चुका है और आज यहाँ पे बाकी टीम्स का मैचेस होगा। टॉप 15 क्या वीडियो देखे? My reply to Alan Shah. क्या वीडियो देखा जाए? अच्छे बहुत भूख लगा है। ये क्या है?
मिर्जापुर का नया मूवी आ रहा है। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट का क्या देखे, क्या देखे? ट्राइडेंट, ट्राइडेंट्स प्रो स्क्रीन करेंगे और प्लेयर्स अपने रिटेन करेंगे। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी ड्रॉप फाइट के ऊपर और क्वांटम स्पार्क एक बार फिर से एक अच्छी शुरुआत के साथ। आई गेस कि क्वांटम स्पार्क के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ स्टडी किया अपने ड्रॉप क्लैशेस में, बल्कि उन्होंने रिटेंशन भी क्रिएट किया। इस बार वो रिटेंशन उन्हें देखिए प्रॉफिट देकर गया है। 3 टोटल एलिमिनेशन लिखे था कि अभी भी वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, चाहे तो उस अकेले खिलाड़ी के ऊपर भी वार करके एलिमिनेट कर सकते हैं। बजवाइल पे चलना शुरू हो चुकी है, दिक्कतें रहेंगी काफी सारी टीम्स के ऊपर, बट टीम कोर्सेंट असैसिन्स आज के मुकाबले उतने अच्छे नहीं देखने को मिले, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब खेला है, बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करी है, बट लीड में आके वो रुक चुके थे, जिसकी वजह से शायद मुकाबला बिल्कुल एक चैंपियनशिप की तरफ लेकर जा सकता था, बिल्कुल एक टॉप पे लेकर जा सकता था। वो थोड़ा हाफ मिडवे में आके कन्वर्जन थोड़ा सा रुक गया, पर टीम लिखिता 3 खिलाड़ी वहां पे एलिमिनेट। इन्फर्नो के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी सबसे ज्यादा कि वो रिकॉल करे, और सबसे बड़ी बात टीम्स खेल रही है टीम जो कि उनके खिलाफ जा सकते हैं। आईको रैकनिंग यहाँ पर मौजूद है, हम लोग देख पा रहे हैं क्वांटम स्पार्क के प्लेयर को कोर्ट रीजन के खिलाड़ी ने तो कुछ स्प्रे ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से हेल्थ अच्छा ट्राइडेंट न्यूज़ ऑन मेटा में हो रहा है ब्रो। यहाँ से बचना असंभव सा लगता है मुझे तो इन्फर्नो के लिए, और अगर बच भी जाते हैं तब शायद वापस से टीम सेम काइंड ऑफ मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। आई हाईली डाउट कि इन्फर्नो पे जिम्मेदारी थी रिकॉल की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जिस स्थान पे मौजूद है मुझे लगता है उनका रिकॉल प्लेयर कहीं और था और शायद कहीं वो एलिमिनेट हुआ है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें यहाँ से बढ़ सकती है इन्फर्नो के एलिमिनेशन के बाद। मीनवाइल आईको रेकनिंग के प्रो एक बार फिर से आईको रेवलेंस पार्क के निंजा उनको टेक डाउन करेंगे। कंफर्मेशन लास्ट 2-3 इयर्स में उसका टीम इंडिया सारे इवेंट चेक कर देखो टॉप पर। मैं जीतने की बात कर रहा हूं यार, कंटिन्यूड है। आप पहले आपका देखो, बैक टू बैक एंगेज करते हुए 4 मैन ऑल सेटल्ड एज अ यूनिट इस फाइट में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा प्रेशर अब आईको रेकनिंग के ऊपर बढ़ता हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक आईजेल के ऊपर कि वो फाइट में किस प्रकार से अपने टीम के प्लेयर्स को इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि अभी के लिए जिस हिसाब से अर्जित ने यीशु की वो जोड़ी है वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क ऑन तो कर रही है। इवन इंप्लीमेंटेशन बिटवीन द फाइट्स गन पावर को वो काफी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। पर तो वही सब्जी बनी फ्रंट लाइन पे हाथ में नेट था, बट फिर भी देख सकते हैं कि सस्टेन कर पाया, अपने आप को बचाने में कामयाब रहे, हेल्थ बार को रिगेन करेंगे। पर इतने बीच देख सकते हैं कि यशु एंड मास्टर उनका एक कवर देखने को मिला। आईको रैकनिंग को स्कैटर्ड किया गया, एक एक करके खिलाड़ियों को अलग थलग किया गया, जिसके बाद क्वांटम स्पार्क के लिए रैकनिंग के प्लेयर को समाप्त करना थोड़ा सा आसान हो चुका है। अब प्रेशर बिल्डअप कर ही रहे थे और अब यहाँ पे लविश को भी ग्रेनेड के साथ दक्ष ने डाउन कर दिया है, फिनिश भी किया पूरी तरीके से 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ। एक अर्ली फेज में डोमिनेशन चलता हुआ टीम क्वांटम स्पार्क का बहुत ही बढ़िया ड्रॉप फाइट पुल ऑफ किया। मल्टीपल टीम्स वहां पर मौजूद थी और अब यहाँ से कैपिटलाइज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। टीम वेल्ट स्पोर्ट्स 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी। रिको का एक बहुत बेहतरीन पारी शुरुआती क्षणों में देखने को मिलता हुआ। 16 टीमें वो अभी भी यहाँ पे जीवित 61 खिलाड़ियों के साथ 10 मेंबरशिप गिफ्ट कर सकता हूँ भाई, मैं करना है कोशिश कर रहे हैं हासिल करने की। T7 और आया के प्लेयर्स को अभी भी यहाँ पे जीवित इन्फॉर्मेशन लेके धीरे धीरे क्लोज इन करेंगे, अलग अलग दिशाओं से अटैक करने का प्रयास T7 और आयन के पर सफलता अभी भी बाकी। पर आई बिलीव कि जिन टीमों को लगता था ना कि उनकी गन पावर कहीं ना कहीं वर्क ऑन कर सकते हैं, वो फाइट ओरिएंटेड काफी बढ़िया खेल सकते हैं, उनके अंदर सेकंड मैच में करूंगा देखने को मिल रहा है वापस से। सेकंड मैच में करूंगा अभी फाइट में देखिए सस्टेन नहीं कर पा रही थी, काफी ज्यादा एक सर्वाइविंग स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से फाइट इंप्लीमेंटेशन बहुत ही शायद मुश्किल से हो पा रहा था। पर इस बार प्रोमिसिंग टीम बनकर आए। लास्ट टाइम देख सकते हैं कि पोडियम पे एलिमिनेट किया अपने आप को भले ही, बट ठीक है वहां पे आपने अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर लिया था फिनिशेस को। अभी देख सकते हैं कि डायरेक्टली फाइट में इंडल्ज कर रहे हैं और हर एक इंडल्जेंस के साथ, हर एक फाइट में जुड़ने के साथ उनके पास पॉइंट आ रहे हैं। टोटल 6 एलिमिनेशन है और अभी भी यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। T7X के 2 प्लेयर्स को और एलिमिनेट करेंगे तो 6 को 8 में तब्दील करेंगे। पर T7 उनकी भी गन पावर में तो देखिए दमखम था, क्योंकि 8 टोटल एलिमिनेशन तो उन्होंने भी से ड्रॉप क्लैश से कमा लिए थे। मैंने कहा था ना देखिए कर्मा की 5000 लाइक्स पे करूंगा गाइस गिव अवे, 5000 लाइक्स पे मेंबरशिप। उतनी देर तक एक तो सर्वाइव करने का मौका मिलेगा और उतनी ही अच्छी तरीके से पॉइंट्स इकट्ठा करने का, जो कि शायद T7 वो यूनिट 5000 लाइक्स करते नजर आ रही है साफ। ठीक है, कोई गलती नहीं करना चाहते T7 के प्लेयर्स। हीरो को लगातार ग्रेनेड से कनेक्शन फाइंड करने की कोशिश, ड्रैगन वो कनेक्शन मिला भी, बट मोनोटॉप थ्रो किया गया है टीम वेल्ट स्पोर्ट्स की तरफ से।
थोड़ा सा डैमेज भी यहाँ पर हुए 2T7 के प्लेयर्स, लेकिन छोटा सा विंडो मिला, डैमेज दिया, बैटमैन आगे एड्रेस भी करेंगे, शाम को डाउन भी किया। एक बहुत ही उम्दा कनेक्शन आता हुआ T7 की तरफ से। हम चर्चा कर भी रहे थे टेस्ट के ऊपर कि डोमिनेशन डोमिनेशन रॉन्डो में मिला, क्योंकि पता है कि यहाँ पर खुलकर खेल सकते हैं, वो खुल के खेल भी रहे। वैसे स्टेज 4 2 खिलाड़ी डाउन, डोप एंड हेक्टर वो अभी के लिए यहाँ पर जीवित। डोप के ऊपर सारा दारोमदार, हालांकि हाई ग्राउंड का एडवांटेज, लेकिन सामने टीम क्वांटम स्पार्क की जो कि एक अच्छे मोमेंटम में है, एक अच्छे लय में है। 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी उनके पास है। एक डिप में खेल रहे हैं यहाँ पर यशु और उनके साथ यशु 6 फिनिशेस उनके खाते में इस मैच में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टॉप नॉच चलता हुआ, हालांकि 2 खिलाड़ी उन्होंने गवाए, लेकिन क्वांटम स्पार्क अभी भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। मल्टीपल टीम्स उनके इर्द गिर्द, देखते हैं कि किस तरीके से वो इनको टैकल करते हैं। अगर क्वांटम के हर एक खिलाड़ी के पास रिकॉल बाकी है तो डेफिनेटली दे वांट टू गो ऑल आउट, बट इस फाइट में अगर उनके पास खिलाड़ी नहीं है तो फॉल बैक करने का प्रयास भी शायद वो नहीं करना चाहेंगे। उन्हें पता है एक तरफ वाइल्ड फैंग है, एक तरफ एक बोजन जो उनके ऊपर नजरबंदी करके बैठे हैं, पर ऐसे में मास्टर आगे जाकर वो भी टेक डाउन किए गए, दक्ष वो भी एलिमिनेट किए गए। अब सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं यशु, और यशु को अपनी टीम के लिए एक यशस्वी लाइक अ गेम प्ले दिखाने की नीड रहने वाले। और हाँ, प्लेयर्स के पास रिकॉल नहीं बचा, बट यशु काफी अच्छा एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड ऑन तो किया, बट टीम एक पोजन काफी वेल डिफाइंड थर्ड पार्टी रीड करके वहां पे किया गया, जिसकी वजह से यशु वो भी एलिमिनेट हुए, बट वाइल्ड फैंग को एक इनडायरेक्टली कवर भी मिल गया। पर ओवर देयर टीम कोड्स एंड असैसिन्स भी देखिए कोशिश कर रहे हैं कि एलिमिनेशन इस फाइट से ही निकालने का प्रयास करें, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उनके नजदीक कोड्स रेंज के प्लेयर्स हैं, उनके नजदीक टीम प्रतिष्ठा के वो एकमात्र अकेले खिलाड़ी बचे हैं, और शायद वो उनके लिए एक काफी बड़ी परेशानी इकट्ठा कर सकते हैं। पर रोमन फ्रंट लाइन पे गए, वाइल्ड फैंग के खिलाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज किया, पर बचने में कामयाब रहे। खिलाड़ियों का सही टाइम पे एक सही कवर भी देखने को मिला। बेहतरीन कमबैक तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन टीम आईक्यू रेकनिंग से रोमन वो इकलौते खिलाड़ी है जो जिंदा है। वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर सकूरा एक बार फिर से आज चलते हुए सेंसे को देखिए डिप बनाया है, और पूरा इस्तेमाल रोंडो के इस मैप का, जो भी एबिलिटीज वो यूज कर सकते हैं उनको सब यूज करना है। बहुत सारे गड्ढे किए गए हैं और उसमें व्हीकल भी रिजर्व किया जा रहा है, बट जो एरिया है इट्स अ लो लाइंग एरिया, और पूरे रेडार पे है वो जस्टिन के 3x देखना होगा कि क्या कनेक्शन टीम गॉड्सरेन वो फाइंड कर पाती है टीम वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। जो गड्ढे करके व्हीकल उसमें उन्होंने जमा रखा, लेकिन सर्कल के सेंटर में वाइल्ड फैंग के साथ साथ गो सोलो हिग्बोजन वो मौजूद रहेंगे। टीम ट्रू रिपर्स वो भी सेंटर में एक अच्छे लोकेशन को स्पॉट करने की तलाश जारी रखेंगे। पर जिस हिसाब से सर्कल का बिल्कुल सेंटर ओरिएंटेड एरिया इतनी मल्टीपल ऑफ टीमों के पास है, वो एक्सेस वो कंट्रोल इतनी सारी मल्टीपल ऑफ टीमों के पास है, होता है कि यहाँ से अगर जो टीम अपने आप में एजेस के करीब निकल जाए, थोड़ा सा चार दीवारी के कवर फाइंड आउट करे, उनके लिए मुकाबला बढ़िया सस्टेन करना अच्छा रहेगा। वाइल्ड फैंग आप जितना ज्यादा ऊपर में रहेंगे आपके लिए चीजें उतनी ज्यादा बिगड़ेंगी। इवन हाँ, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ आज, जैसे आप सोचते हो ना वॉचिंग से फर्क पड़ता है, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वॉचिंग से फर्क पड़ता है, डील्स आते हैं वॉचिंग से। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉचिंग से ये होता, पता है कैसे होता है कि आप कितना ज्यादा कंसिस्टेंट हो, आप कितना ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हो, दिख रहे हो ब्रांड को, वीडियोस डाल रहे हो, देखने को मिलेंगे। गुंडा को पिन डाउन किए गए हैं, तब अगर आपको वॉचिंग आ रही है उस तरफ मूव कर रहे हैं, बट आप कंसिस्टेंट नहीं हो, क्योंकि एक मिड रेंज बैटल है तो फायदा नहीं है। स्पेस की प्लेयर अपने रिटेन कर लिया जाए, और वही आप कंसिस्टेंट हो बट इतनी वॉचिंग नहीं है यार, वॉचिंग से पैसा आता, देखना होगा कि माफिया एड रेवेन्यू कोई कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि एक विंडो क्रिएट करने की जरूरत है, प्रेशर बिल्डअप यार यार इसका बुरा माफिया अभी 5000 की आई थी, इससे पहले सुकूना ने 19,000 की आई थी, और अब आइको रेवेनेंट एक्सपार्क वो दिक्कतें बढ़ा सकती है टीम विक्टोरियस समझ के लिए। मेरे को 2500 की भी आती है, मैं खुश हूं। टीम कन्फाइंड स्पेस में इसका 1000 प्लस भी आती है, मैं खुश हूं। हालांकि ऐसे में टीम आइको रेवेनेंट एक्सपार्क भी शायद इसलिए भी देखे ज्यादा ओपन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये एक रोंडो का इलाका है, ये टेरेन्स काफी ज्यादा आपके लिए खतरनाक बन सकती है। एक पोजन प्लेयर बनी
और उन्हें वाइल्ड फैंग के 2 प्लेयर्स वो टेक डाउन किए गए उनके द्वारा, स्प्रे कोड एंड सकूरा। अब तक 2 प्लेयर्स चल रहे थे, वही देख सकते हैं कि अब टेक डाउन किए जा चुके हैं। कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ता है। आप गेम में आप डेस्परेशन देख पा रहे हैं, बाकी टीमों के द्वारा भी आप डोमिनेशन देख पा रहे हैं, बट ठीक पोज ऑन आपके पास हाइट का एडवांटेज है। आपने अभी अभी एक टीम के ऊपर 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया, पर उससे पहले विक्टोरियस चलिए उनको टेक डाउन किया जा चुका है। 6 टोटल एलिमिनेशन है टीम आईक्यू रेवरेंट एक्सपार्क के प्लेयर के पास, और ऐसे में देख सकते हैं दे आर रियली रोरिंग लाइक अ लायन। उनका स्पार्क जो अभी तक मिसिंग था वो वापस आ चुका है। सेम काइंड ऑफ हमने शुरुआत टीम क्वांटम स्पार्क के प्लेयर्स के साथ देखी, मिड में हमने टीम आईक्यू रेवरेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स को देखा, और अब देखने वाली बात है कि एंडिंग सर्कल तक कौन सी टीम है जो कि अपने इसी के सेम काइंड ऑफ गेम प्ले को, इसी सेम काइंड ऑफ माइंडसेट को कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाती हैं, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट टफ चांस इन दिस राउंड राइट नाउ। अगेन एजेस के अराउंड आईक्यू स्पार्क, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो इन जोन रोटेट कर रहे हैं अलग अलग व्हीकल में, एंड वो हंड डाउन करना चाह रहे हैं प्लेयर्स को विद सिमिलर स्ट्रैटेजी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव है आईक्यू रेवरेंट स्पार्क के स्ट्रैटेजीज में, लेकिन वाइल्ड फैंग एज को डिफेंड करने का पूरा प्रयास। चलिए मैं बात कर भी रही थी, और निंजा उनको पिन डाउन किया गया। वो इन जोन जो रोटेशन चल रहा है फिनिश भी किया गया, और अब मात्र 2 प्लेयर्स के साथ वो इस मैच में जीवित। सुकुना वो भी मूव कर रहे हैं अलग व्हीकल में, पेन वो अलग दिशा में जाते हुए स्प्रे गॉड उन्होंने स्पॉट किया व्हीकल से पेन को, और जो शॉट्स लिए भी गए डैमेज दिया पेन की तरफ, और पेन एक कवर की तलाश में, लेकिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है ओपन थर्ड पार्टी की तरफ से। हेक्टर ने डैमेज दिया सकुरा को, और अब फिर से वाइल्ड फैंग्स अपने डिप के अंदर। पर टीम TC4 इस बार उनके द्वारा भी एक बड़ा टेकडाउन निकाला गया है। वेल्थ के एक खिलाड़ी को ओपन में पकड़ने का प्रयास जरूर से है, जिसकी वजह से शायद गोकुल को सर्वाइवल करवा पाना वो भी एक टफ टास्क रहेगा। हालांकि सकुरा चलिए उन्होंने एलिमिनेट कर दिया एक खिलाड़ी को। लिखित है Esports के प्लेयर, वो भी एक बड़ी ऐसा लग रहा है कि विषमताओं में फंस चुके हैं, जहां से शायद निकल पाना उनके लिए आसान नहीं। हालांकि उनकी बैटल चल रही है टीम कोर्सेंट असैसिन्स के प्लेयर्स के साथ। TC4 के आखिरी के 2 ही खिलाड़ी मौजूद हैं, राउंड द सर्कल रोटेट करना चाहते हैं, और राउंड द सर्कल रोटेशन मल्टीपल टाइम आसान रहता है, पर उन टीमों के लिए जिनके पास मैन एडवांटेज होता है। अभी TC4 आई डोंट नो व्हाई, बट इतना रिस्क लेना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपने एक अच्छी तरीके से सर्वाइवल सिचुएशन दिखाई, पर अब आप एकदम से अगर अपने टेम्परामेंट में चेंज करेंगे तो चीजें आपके लिए वैसी तो नहीं बनने वाली जैसा आप शुरुआत में सोच रहे थे। अगेन गॉसेन असैसिन्स की भी टीम अच्छा 100 के वॉचिंग से कितना पैसा मिलता है पता नहीं यार, कभी खाया नहीं हो तो पता नहीं। चारों प्लेयर्स के साथ इस मैच को बड़ा बनाने के लिए पहले सबसे हाईएस्ट वॉचिंग में गया रहूंगा वही 11 एलिमिनेशंस उनके पास 2022 है में जरूर, लेकिन कैजुअलिटीज वो फेस कर चुके थे। उससे ज्यादा नहीं है, इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, एंड वो भी पता हो जाता है। उसके ऊपर टीम ले जाना सर्वाइवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ही ज्यादा हो गया Right, group green versus group yellow. Who knows? Could be happening right now on our screens. Though, quickly before we do get into this game, I do want to announce that when it comes to our as you said last game, Hodrix, Alpha 7 already eliminated, taken out of the Macau invitation very early on. But now Yangon Galacticos will be the next on the chopping block. All we need for Yangon Galacticos to get eliminated is for Thunder Talk Gaming to get 1 point, Enigma Galaxy to get 2 points, and Furia to get 3 points. Any of those teams get just even one decent fight, Hot Jukes, and that is your PMWC champions out of PMMI 2026, which, again, what an insane upset at the start of this year, and it will be happening again right this game. Wild. And it's just, you knew it going into today that the odds of it happening were so low, and I don't know, by Yangon, especially with Rondo, and now it's looking even more dooming for this squad. Doom and gloom. But yeah, doom and gloom. Trying to think of the safe word to say. It's bad, you know. It's not PG friendly. It's not PG friendly, but it's like, what the heck is going on, you know? But it is what it is, you know. It gives all these other teams an opportunity, right, to become champions and try to hold the title as well, right? Getting there is so difficult. Holding on to it is even more as of late. One thing that I did notice as well, before we got into this match, Max, we did have a substitution from Alula. So Yasser is out. Katab is in. So Alula, तुम अगर कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें भी आ जाएगी ऐसा वाला। अगर तुम्हारी वॉचिंग उतनी नहीं है, बट interesting, आप कंसिस्टेंट हो, आप कर रहे हो रेगुलर, if they आपको maintain डेली that change, if they don't do an Alpha 7 where they change a player literally for one game, then I'm fine with it. If this is like more of a long-term change, because as long as they don't get rid of Claw and Quick,
I'm cool with it, right? Because those were the two main guys. They were the main reason why they had such a good opening day on day one of the group stage. And I'm glad that they're going to be trying to maintain that lineup. At least that duo. I'm just happy about it. Aurora, though, this is still one of my best changes of this year when it comes to this roster. They're dropping Severny. I am loving it. It was a very northern plane. They don't have to go for the stretch over into the military base, which is their typical drop location. And also, there's a bloody loot truck up there. You give it to Ziol. We saw that man came with the P90 on Miramar on their opening day. If you give this man another P90, oh boy, we will get a win from these guys eventually today. Come on. Yeah, I mean, absolutely. I mean, that P90 has just been going crazy so far in this tournament. Right, we've seen some little shakiness with the shotguns after the nerf, but that P90 is just online. That's for sure. best change hota rehta hai tournament के लिए. It is. कभी ये best है, कभी कोई और best है, कभी कोई और. I kind of want to, before we get into any kind of like early rotations, what do you think in this current meta of update 4.4? I haven't checked patch 4.5 beta patch notes or whatever, but what do you think is the best weapon in the game currently? Like all weapons combined, which one is number one? I mean, it's P90, right? Without a doubt. I think so. I mean, it's got enough ammunition, enough fire rate, enough damage to get if you're going to try... The way I just try to describe what is the best weapon is which is the weapon that you could 1v3, you know, most likely with. And right now, it's the P90. It's the most versatile one. It works so good in CQC. Maybe a time that TX best team in India. Yes. I do agree that P90 is very good. I'm actually going to go and say it's the MG3. I feel like the MG3 is just insanely powerful, but I am biased. If I'm trying to become unbiased and say realistically which one is the best weapon right now, I would have to say the AUG, because unlike the P90, AUG can be used at mid, short, long range. And I feel like that adaptability of that weapon is what makes it the best currently in the meta. M4 is really close, right? They're kind of comparable, but AUG for me is just a little bit better than the M4 in the current meta. So yeah, and also it's not a crate weapon, so you can get it super easily compared to P90, where it's only airdrops or only in the loot trucks, and that makes it a little bit worse in my mind. So yeah, AUG it is, and I feel like the players might agree. Yeah, I mean, if you look at what's the most used weapon right now, it's AUG, without a doubt, right? My question is, if you have an AUG shotgun, do you drop AUG for the P90? No, I would play AUG P90. P90, because also the thing is the P90 is good right out of the gate, so you can and you can spray transfer. We saw it with the likes of Silas and Ziol in Miramar in their opening day. So no, I think P90 AUG is like the best loadout in this meta. Would you agree? I think it's situational. You know what I'm saying? I think game that volume low. Game volume low. I can totally see why. You know, like, hey, let's take the AUG, let's take the P90. If you're getting towards late game and you're going to be doing more CQC, then yeah, why not have shotgun P90? You know what I'm saying? So like you could just spray like crazy and then bah bah. भाई गॉड को क्या अटैक में जा रहे हैं सबको पता है तो फिर क्यों मसल कार्ड खेल रहा है हिट तो सही मिलेगा डायरेक्ट या एलिगेशन लगा दिया that is तुम अपना assumptions क्यों बना रहे हो? अच्छा रुको. I can't wait to see people like, don't know this weapon is really good, and they say like the Scorpion or something. I'm like, bro. Oh my gosh, yeah, that one is not meta. It's underrated. God आपका best friend है क्या? The map here. फैजाल भाई, आपको कैसे पता है कि वो जा रहा है? मैं तो यही तो है. आप लोग पता है एक लाइन देखो, आप लोग फैंस हो, नो डाउट रिस्पेक्ट है, आपकी वजह से हम हैं, आपकी वजह से हम हैं, बट तुम्हें पता है कि हमें फैंस कौन से अच्छे लगते हैं? जिनको पता हो कि एक लाइन क्या होता है ना. अब जैसे गॉड ने अपने स्ट्रीम पे मैं देख रहा था कल, उसने बताया कि वो अपने डैड अपनी बहन के साथ बैठी है और पीछे से एक बंदा बंसी बंसी करके चिल्ला रहा है. अबे भाई पता है ना तुम्हें वो उसके डैड का नाम है, तो देखो तो उसकी बहन बैठी है साथ में, वो खाना खा रहे हैं, उसको शांति पे खाना खाने दो. ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि फर्स्ट डे जब मैं लैंड पे गया था तो मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया था, रात को बस थोड़ा खाना खाया था KFC. सुबह उठ के टाइम ही नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, ठीक है, क्योंकि आयरल स्ट्रीम करना था. 1.5 घंटा आयरल स्ट्रीम मैंने कुछ करा. फिर उसके बाद सीन क्या होता है कि मुझे खाना खाना था और VIP सेक्शन में वो सब रखा था, वो सैंडविच और चिप्स और समोसा ये सब कचौरी, मेरा वो खाने का मन नहीं था. तो मैंने
सोचा कि मेरे को कुछ फ्राइड राइस ऐसा सा खाऊं, कुछ पेट भर जाएगा। तो वो स्टॉल था पीछे, फैंस के सेक्शन के पीछे। अब मैं वहां पे गया, ठीक है चलो नो डाउट फैंस, मेरे को पता ही था कि फैंस आगे चढ़ेंगे मेरे पे फोटो निकालने के लिए। फिर वो सब हो गया, फिर मैंने खाना लिया और वहीं पे रख के खाना पड़ता है, टेबल था तो मैंने टेबल पे रख के खा रहा हूँ। तो 2-3 फैंस रुके और मोस्ट ऑफ 2-3 ही रुके और मोस्ट ऑफ देम आके फोटो निकाल रहे और मैं खाते निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसमें से एक आता है, अपना पूरा हाथ ऐसा रखता है टेबल पे, ऐसा लीन होता है, ठीक है, ऐसा पूरा लीन होता है, समझ रहे हो, इतना उसका खराब बॉडी लैंग्वेज था। मेरे को लेजिट गुस्सा आ गया, ठीक है, बट मैंने कुछ बोला नहीं कि छोड़ो फैन है। और ऐसा बोलते हैं और नहीं हो भाई, क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो RNTX में, आओ इधर, ये वो ऐसा कर रहा है। फिर बोलते हैं आ जाओ चलो एक फोटो निकालते हैं, ऐसे टोन है, ठीक है, आ जाओ चलो एक फोटो निकालते हैं, और मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रख देता और मैं खा रहा हूँ यहाँ पे। और मैं बोला ब्रो, फिर मैं थोड़ा गुस्से में देख के बोला भाई खाना खा रहा हूँ, रुक जाना। तो बोलते हैं अरे खाना वाना तो चलते रहेगा, फोटो वोटो निकालो। मेरा चोट गुस्सा, मेरे को जो ट्रिगर हुआ ना मेरे को, मैं तो भी इग्नोर किया कि छोड़ भाई फैन है, कुछ बोल दूंगा खराब लग जाएगा फालतू का। लोगों को इतना बेसिक सेंस भी नहीं होता कि कैसे बिहेव करते हैं। तो आप जो आप बोल रहे हो, जिन्होंने अभी सुपर चैट करा था, ये मैं बोल रहा हूँ, आप ये अज्यूम क्यों कर रहे हो? आपका काम एज अ फैन है एक क्रिएटर को सपोर्ट करना, बस आप वो सपोर्ट करो, भले वो यहाँ है कि बाहर। But a good couple games we should be able to see them locked in for the finals. हाँ मतलब यार ठीक है, देखो आप लोग फैंस हो हमारे, आप लोग हमें प्यार करते हो, हमें पूरा रिस्पेक्ट है वो चीज़ का, हमें वो चीज़ का ग्रेटिट्यूड भी है, नो डाउट। आप लोग हो करके हम हैं, मैं हूँ, बट अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ खाना खा रहा हूँ तो मैं आपको खाना खाने दूंगा ना यार। मैं आपको बस एक बार, कुछ बहुत अच्छे फैंस आते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार नियो भाई एक फोटो ले सकता हो क्या आपके। अगर मैंने बोल दिया ना भाई अभी खाना खा रहा हूँ, बस खाना खाने तो फिर निकालेंगे, वो रुक जाते, वो बेचारे खड़े रहते हैं, रुकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूछते नहीं है, कमांड करते तुम्हें कि भाई आजा फोटो निकालना है, ऐसा फैंस लोग को उधर in the shadow of Alpha 7 for the longest हाथ मिला रहा था, जो स्टैंड उधर थे, जो कह रहे थे हाथ मिला रहा था, एक ने तो मेरे को ऐसा पकड़ लिया पीछे से, तब भी मेरा मैं टिल्ट हो गया भाई वाला। they are the best that Brazil has to offer right now, and so far Influence Rage in particular. अभी कौन सा एनीमे देख रहा है? अभी One Piece. So maybe not this game in particular, but let's go big picture. Maybe for the entire event it will work out. Yeah, big picture is what we gotta be staring at. That's for sure. Because those finals are coming right around the corner. Look at Furia silence. अबे भाई इतने टीम बचे, इंटेंस चल रहा है ब्रो। What is he gonna get? Show us. अभी करूँ गेम सो? Yeah. Dang it. Guys, गिव अवे करूँ? By the way, Nigma Galaxy have मेंबरशिप रुको, अभी नहीं, एंड जोन तक, एंड जोन में जाएंगे, मेंबरशिप गिव अवे करूंगा चैनल का। And there's always going to be a very early loot truck in the first minute or two of the game, and oh my goodness, okay, this is going to be a cliff-ending finish possibly. And again, that road straight next to KSG has that loot truck that keeps rotating. every single end zone में अपन करेंगे। But so far, अभी नहीं, I have to highlight what you said earlier. Regnum Kari got an amazing position to play from. जब top 5 teams बचेगी तब करूँगा। Regnum Kari, if they play their cards right, top 5 is definitely doable in this game. अभी कर दो, अरे क्यों भाई, लास्ट ग्रुप Top 5 is what they're going to be hunting down as well. They're top 5, अभी 16 teams है ना, top 5 qualifying position. Furia, you're going to see them kind of interchanging spots here on the leaderboards. You can see Igor, just right now keeping a good eye on everybody. Done it. They're so set up. I mean, they've picked the right spots here. Prediction बताओ chat, किसका chicken होगा? This location. There's a lot of teams that are going to rotate on into the circle. That's going to be Arena, Aurora, Weibo, welcome. By B-Town gang, bro. B-Town gang. I'm not sure about this location for KSG. It's so open. Literally, you run out of smoke. Like करो voice, 5,000 like. There's a slight dip here, but it's और very Alex, minimal. And anyone has any kind of elevation against you, especially looking at the side of maybe Nigma Galaxy up north with the double warehouses. I'm not loving it, and especially it's so hard to leave this position because everyone knows where you're exactly positioned. Look at that, he got in particular trying to get in that nade range, cooking it up. Like नहीं, top 5, top 5. Throw here. But it's making it known that KSG can't stay here. You see that first nade, you should be looking to leave. But no, it seems like they're really sticking to their guns, and they want to commit to that dip. Again, it's really risky, and Z-Boy almost gets taken on out.
Oh boy. Bro, DSM Entity was the best team in India. Get looted back up. He should अबे be मत able बोलो to भाई, heal फिर वो here. दक्ष बहनचोद मेरे को Enigma WhatsApp पे Galaxy मैसेज have the करेगा दक्ष. warehouses, so they are set up. Those are so difficult सब to काउंटर crash किधर है out with पाशा? all these different कितने teams सब्स in बचे those अपने different 761 directions. के लिए? Driving 300 up to them सब्स is not बचे. gonna करो be करो an करो easy करो. task. So right अबे now, I फैजान mean, था all तेरी these माँ teams का have picked हूँ. pretty much every good spot in this area. Right now, the hopes for them is just the EWC zone देखने locks जाओगे? them down here. यार And then it's gonna be a मालिक great ने बोला तो था final for all these guys. कि नियो भाई पेरिस चलोगे. But how is अला it यार really looking मालिक आप loot-wise? लेके जाओगे साथ Silence, तो. not looking too bad. He's got a UMP. देखो इतना मेरे को पता है M4. कि अगर मैंने He's रोहित भाई को just बोला रोहित भाई adjusting जाना है मेरे that को buggy पेरिस just a मन little है, bit, just in case वो that zone मेरे does को go in a इतना different मेरे को direction. पता है Yeah, just be 100% कि quick. वो But मेरे को influence rage down to टिकट 1. करा के मेरा That's स्टे वे tough. सब अबे भाई पता है I तुम्हें just realized अबे इतने the other डेंजर day है we वो. had so many purple teams, now we got so many red teams. अभी जब मैं लैंड पे था तो आपको पता है मेरा लगेज है ना जो वो मेरा लगेज मुंबई में रह गया था क्योंकि उसके अंदर पावर बैंक था तो वो जयपुर आ नहीं पाया. तो अब मेरे पास कपड़े नहीं, मैंने एक ही वो जो जीन्स और वो सब जो पहन का है वही है बस मेरे पास. तो मेरे डैड भी बोल रहे हैं कि कब आएगा ये, वो लोग ने बोला 2 दिन लगेगा. तो फिर मैं नेक्स्ट दिन मेरे डैड बोलते मतलब जिस दिन रात को पहुंचा और फर्स्ट डे लैंड के फर्स्ट डे के पहले जस्ट बोलते कि तू वापस आ जा मुंबई, तेरा लगेज ले, लोग नहीं भेजेंगे, बहुत सीन हो जाएगा. तो मैंने रोहित भाई को बोला, मैंने बोला अरे मालिक यार मेरे को शायद वापस जाना पड़ेगा मुंबई, मेरा लगेज लेके वापस आना पड़ेगा. बोलता अरे कहाँ जाना है, तुम चलो मैं आपको शॉपिंग कराता हूँ, रात को चलो, क्या है ये कपड़ा वपड़ा, चलो रात को. फिर लैंड पे आए और मेरा सेकंड डे पे बर्थडे था, नहीं थर्ड डे पे बर्थडे था मेरा. तो मैं पूछा रोहित भाई यार आपने कौन सा एक नाइकी का बढ़िया सा जूता पहन रखा था. मैंने बोला कौन सा जूता है, तो यार आपको चाहिए क्या बताओ भाई, ऐसे रैंडमली. यार नहीं यार रोहित भाई बता रहे बर्थडे गिफ्ट समझ लो. अला बर्थडे गिफ्ट बोला है तो दो ना फिर भाई. बढ़िया था वो नाइकी का लेटेस्ट वाला जो इजीज है ना, इजीज वैसा. तो मैं अगर रोहित भाई बोलूंगा तो डेंजर है भाई. How is KSG still alive? फिर मेरे को पता है गॉड क्या बोलता है, गॉड खड़ा था वहाँ पे, गॉड खड़ा था वहाँ पे और गॉड बोलते हैं ऐसा है कि तूने बस रोहित भाई को जूता पूछा, रोहित भाई ने बोला चाहिए क्या तुम्हें और तेरे को दिला रहे. बोलते हैं फिर गॉड बोलता है मैं भी जाके क्रॉन्टन को पूछूं क्या कौन सा जूता है. मैं बोला fully send it, go for the squish play, and that is it. Game over. The comeback of KSG is cut short. हाँ easy. I didn't say Nike का था, sorry easy नहीं था. 24th if Goat get a single point this game. गॉड बोलता है मैं भी जाके क्रॉन्टन को पूछता, क्रॉन्टन कौन से जूते पहने. Don't need all the points they can get at this point. Not a bad start. I love to see teams like Rock Bottom just come in day 2 and just come out swinging, right? Oh, Silas though, getting a nice knock and finish on the Zol from Aurora. अबे WPG का एक बचा है. Position now compromised big time as it's just down to one single player. Regnum Karya taking full advantage of this Silas. Now one nade. It's all up the top. Can he get the shack? Just short. This shed is terrible. It's a playable position if it's on the edge of the circle. When it's center, you got so many teams Surya looking your way, Al Ula, Enigma Galaxy. W Rohit भाई, हाँ भाई W Rohit भाई. You're looking your direction. अबे देखो यार पैसा वैसा जो भी है, एक पैसा होना अलग बात होती है और खुल के खर्चा करना अलग बात होती है. बहुत हो गया पैसा होता है बट खुल के खर्चा नहीं करते. Meeting their maker very कुछ early होते हैं जो on. बहुत खुल के खर्चा करते हैं. Wait a minute, Federal not taking the shot to Razy. He has no idea. रोहित भाई उनमें से एक है. Right there. Yeah, gotta take it. Gotta take it. And Razy's like, खुल what के are you खर्चा. doing there? Are you kidding me? And now Axel with the shotgun. और टॉप 5 टीम्स में करूंगा मेंबरशिप में, टॉप 5 टीम्स में. Lot of movement there. Parkour. Let's see if this nade will hit. Oh, good nade. Oh, no way, Federal, the 1v2. He did it with a pistol yesterday. छोटे बल मेरे पे जचता नहीं है a little bit hard to climb it. He doesn't want to get up. He doesn't want to fall down. Still got one more grenade. One more grenade. He's falling down. The mess up is huge. Swapping on over to the DBS, but he does find him eventually. That's Influence Rage taken on out of this game. Oh my goodness, Federal, what an incredibly risky play, but eventually it does work out. अबे भाई टॉप की सारी टीम्स तो हग दी. Now we're going to see KRX नॉन्गशम get किधर है the better नॉन्गशम? of E Arena. So I mean, हेले fights खोने आ happening गया. all over the place. K1 coming out from the edge, looking at a third party. That meanwhile, Federales
gonna have to run away as Furia. They heard all this action. अरे Say, you know membership what, वही let's get कर this रहा third हूँ. party going and let's dominate this position. And that's Federals out of there. So Furia are holding चढ़ जाएगा, चढ़ा on दिया to ना. that ridge line. अबे खूनी तो बहुत realized- ही है. That's अगर perfect खूनी नहीं timing है मैं too, because चिकन they वाला gotta तो go in the circle. I just हो realized सकता है it's खूनी Federal ऊपर आ taking out सकती है. Federal. भाई 8 No, टीम से चाइना Yeah, की that's what ले happened. बीटी है. Wow. Federal action. Yeah, भाई it's इन पे Federal बहुत action अच्छा all over the place. But yeah, कंट्रोल है. they पता है क्लाउड do हिल का. eventually avenge their देखो ये Brazilian क्लाउड हिल पे brother. पूरा So स्प्रेड that's हो gonna be सकते हैं Furia लोग. getting अबे himself हाँ a win. तो And actually, the इनके circle पास तो shifted ये completely पूरा away. We just saw here a few seconds वेस्टर्न ago. साइड का तो Away from पूरा the है. top side. और ये जो So नीचे K1 वाला instantly being quick on the compound pivot, है ये getting भी. back in their vehicles, going for mad northern rotation wide on the pivot. अबे तो इन लोग And क्लाउड getting हिल और very ये close to the स्प्लिट क्यों likes नहीं of खेल रहे? Nongshim Red Force. Not gonna lie, Nongshim Red Force, I was कर expecting दे, to see कर a दे, little bit कर more दे. presence from this team. Sure, they कर are दे. still looking comfortable in कर the दे. top position. That will be enough to make it in the top 15 of the finals. कर दे चैट. I can't stop but just want more from this अबे lineup when ये you have देखो so easy कितने अपने सब्स है and अभी. XCY. मैं दिखाता हूँ. There's still a lot more these guys can bring to the table. Like Rengnam ये देखो Kara, इतने that so subs far है. have been defending that position this entire इसको game. ज़्यादा 61 क्या कर दो? Eliminations in the process. बप्पा मार के एक साथ. And now Hoxie goes down. एक That's साथ. Alula, yeah, looking to bounce करेगा, back strong. करेगा, Did a little bit of a करेगा, roster swap करेगा, here, but करेगा, now they're in करेगा, trouble करेगा. as Furia is एक on साथ the चैट move जितने भी हो and are सारे wiping एक the साथ. floor with them. It's just quick Thunder Talk. Looking एक to third साथ. party this. सारे के सारे But सब्सक्राइब Furia कर doing a देना great चैट. job of finishing things out so quickly here. I love that Ayala up here. This is such Anybody a good started, angle. bro? Finds claws. Wow. The Patch MVP of कर रहा हूँ. Alula taken on out. Aruba. That's Furia, another win, making it maybe 10 eliminations if they can just get 2 more up in their arsenal. Alula भाई Galaxy है. still got one. It's quick. But yeah, Enigma Galaxy and Thunder Talk won a third. Thunder Talk also won a third party this fight. Fury are looking good right now, Hot Jukes, but as the fight evolves further and further, there's going to be that sandwich situation. Can Furia weather this storm? Yeah, I mean, Enigma Galaxy have a सोनिया safe spot in दिल those से warehouses, but they heard मिला announcement, hey, you दे. know what, can we get out of zone and actually get some eliminations? Instead, they say, you know what, the fight has calmed down. Let's get back to safety. Ayala all by his lonesome in this shack. It's a great off angle, चलो right? और You're able to get पाँच so much support for your team and information. और पाँच Quick अपन forced to run out and gone. next match So में करेंगे. Furia on fire here. 10 और पाँच अपन eliminations. next match में करेंगे. Now Ayala gets knocked. So yeah, that's that angle done and dusted. As GOAT now going to have the job of gatekeeping these squads. Well, they're not really going to gatekeep it here, Hodrix. Look चलो at और the पाँच position अभी they कर got. Three देते more हैं squads, यार. three अभी players कर in देते हैं. Nongshim Red Force's compound and 4 solo in this shed. I would say it would be good if he can stay hidden, but there's literally a car right next to the shed. They know someone is here, and they just don't care. They're just going to try and leapfrog that position, setting it right onto Jing, which is actually going to be a neighbor of top from Aurora Gaming. They do crash the car, the Dacia straight into the tree, trying to tank it up. But yeah, Force, I think, about to meet his करवदीर मार भाई जरा गिफ्टेड मार थोड़ा. क्या सपोर्ट है भाई. Might be able to take down a member of Fury जमीन भाई भी नहीं आते क्या not looking अभी. too good. Did he get to the back of it? No, yeah, there you go. So अरोरा का that's एक Force प्ले बचा. gone. अबे फ्यूरिया. Beauty are going to add another elimination to their total. भाई इन लोगों तो बहुत इंटेंस हो रहा है भाई. Now Silence just getting healed up, ready to go. Beauty making it happen with just pure aggression here. Yeah, so you know what? Let me get that confirmation. No stealing eliminations here. Bro 40 Well, man, क्यों the leaderboards are नहीं shaking up खेल रहा? I don't know. As we go into stage 6, Enigma Galaxy, Regnum Karia battling it out right now, throwing some utility. Regnum Karia trying to get the nades going. Not an easy one to hit with this hillside. चिकन किसका होगा बताओ They're so split though. Regnum Galaxy. Karia They've तो got Navalo wide on the off angle. Actually, does have a bit of a line. Regnum Karia ने क्या pose hold कर? What the fuck? Pinned है bro Regnum. Going for the spray. It will pay out. What a good angle Go, here. go. And waiting right for the good opportunity to go for that engage. ये Regnum ने क्या hold कर रखा Now है? got to commit, as you say, go, go, go. We need to see the engagement right onto Regnum Karia, but they're taking so long. Satan getting punished. The backstabber's chief is huge. What's going on? And this might allow Regnum Karia to go for a full reset. अबे There's no पेंचो way दी they कैसे नहीं survive मार this. सकती इंजेक्शन को? Enigma इतने पिंडे हो Galaxy Regnum taking Karia so वहाँ पे. long after that knock to push this. And Regnum Karia are able to कौन get कौन a कौन नहीं जा reset रहा? here. भाई रीसेट हो Shockingly. गया Regnum Karia का. Now Coops is starting to enter the fray. But Narvalo from up top doing absolutely nothing from that position. बस इनको. And yeah, ओह चल इसको इन्फॉर्म just like किया that. भी I मूव mean, किया. Regnum Karia get everybody back up. And oh, nice shots there through the smokes from Enigma Galaxy. But now Coops getting peppered. Ooh. That's
good. Raul So able to Neyoo, force bro, off Silas. in But there. it really is Furia just ruining this entry point for Nigma Galaxy. The backstab of Chief was huge. Just kind of clipped the wings of this team. But Narvalo's got the angle too. He makes it a little bit closer to a decent ridge line. The smokes are going भाई यहाँ पे अगर अरे पाली भाई पाजी भाई मैं पाजी ना रुकते लो भाई जन गिफ्टेड पाजी भाई ओपी हो जाए यार पाजी यार आप सर्वर में नहीं आ रहे क्या मसला है यार पाजी ओपी हो जाए भाई पाजी ओपी हो जाए पाजी भाई ना भाई This took so long. It took so long. K1's like, all right, what's going on over ओपी here? यार All right, पाजी let's see. पाजी सर्वर वर्वर में Maybe ना we आ can रहे get on क्या this मसला action. है And they're still a little hesitant to crest this hill. But they're throwing out Bhai. the smokes, trying to get some sight lines aside, and there goes PR Paji, Rao. thank you so much for the support. Now Means K1 a lot, applying that pressure. We'll Paji. see if Regnum Karya hear this and decide. भाई to रेगनम do something कार्या about कहाँ it. से बच गई भाई? And that is Ralph out of there. Just up to Narvalo. DRX KRX बन गई है. left. I don't know. I don't know. Let's see Wayne. what they decide to do. Yeah, right now it's just, I guess, just snake it out at this point. Can't move much. Only अभी 22 ये bullets कौन too, तो so it's not बेंच looking कौन too तो good. Coops does have a हर fast, so जगह you से know what, could be clear working shit. out, but it's मैं going वही to बोला be ना. Says to find himself that तो वो knock भी onto इतने his टाइम वो सरवाइव करी है वहाँ पे. The fact they still survived this long is kind of impressive from Regnum Kara. So really Game good का sound play बड़ा. around with those exploded vehicles and those smokes to try and just survive करम भाई जाओ that उधर तेरे को initial कोड रेड encounter. करने Now बुला two रहे हैं teams लोग. fighting them at once, and the off angle of Fury भाई is यार. still looking their direction. I feel like पता है पाजी अब आरपी कम खेलता तो बढ़िया लगता Narvalo, है. the blue zone, comboed up with passion. That is going to be game इतना टाइम over for him. कंज्यूमिंग है ना ये आरपी. Neyoo Galaxy getting absolutely wrecked. It's down to just a solo. It's going to be Coops himself as K1 just starting to farm up some eliminations. And they need it here, Ultrix, as they are still in 22nd position. They need to climb up right now in this game. Yes, they do. Let's see what K1 could do as they start to put some more shots down range. And that's going to be Wild getting peppered. Dez getting the angles, and that's Regnum Karya out of there. K1 HA. looking alive here in match number 2. Meanwhile, we're going to go ahead and shift the fight on over to the zone. You're going to get Thunder Talk, Ghost, Exerchecks. Red Force, all sharing these Exerchecks. compounds. HA. And all the rest of the teams are going to have to try to make a push DRX on in यूनबिन into this NS direction. यूनबिन में है. हाँ अभी K1 नोंगशेम though, यूनबिन हो गया ना. great अबे start. यूनबिन तो बहुत मारता है They बेंच. should be देखा able नहीं to ना get मैं good भूत hill बना दिया sides था as जब well, आया so था this is दिल्ली gonna में. be a really good game for them. भूत बना दिया था This compound भूत. is so interesting. I feel like you mentioned it. साला on मैं the बैकस्टेज opening बैठ के bell देखता था for this compound यूनबिन ही is यूनबिन चल रहा है. basically लेफ्ट three राइट mini यूनबिन ही compounds मार in रहा है one. भाई. So you can have three teams coexist, right? बहुत Thundertalk's एकदम got the southern बहुत one, Nongshim मारता Red था Force भाई got that यूनबिन. one main central building to the western side, and then the ब्रो eastern buildings पुणे are के gonna कॉलेज में support मीटअप किया था. right हाँ inside जब it. पुणे Well, आया inside था it, मैं it's three अभी players Goat in एक Moxie, महीने पहले. Liato, and Focus. So if any team PMIS goes for a MVP crash, you've got to यूनबिन. हाँ pick यार one बहुत particular बहुत building. मारता If you're यूनबिन है. K1, you can't spread up between two buildings. Otherwise, you're taking a TT 2v4 हाँ and बे another थंडर 2v4 टॉक्स को at the क्या हो same गया? time. थंडर टॉक्स में You किंग है pick ना. one building which थंडर टॉक्स बहुत normally you would go अंडर onto परफॉर्म Nongshim कर Red रही है Force's भाई. building, right? Because it's a bit harder to third party for the likes of Thunder Talk and Goat. Right now, it's literally a super team, Hot Jukes. All three teams of Goat, Right? Thunder Talk, and Nongshim Red नागपुर Force आना are नहीं हो. working together, हाँ. waiting to Shadow आएगा, eliminate Shadow K1 के and साथ. Furia, and off the back of that, they will fight each other to go ahead and claim that win. नोल्बो और यूनबिन दोनों अच्छे प्लेयर भाई. Who's going to get the win is the Nolbu question was right now. You can see Silence getting knocked. K1. Maybe Nolbu. Yeah, just pressuring Furia as they're just trying to Nolbu edge their way into this circle. But I was talking about, right, मारता this है बे. hill यूनबिन भी बहुत is मारता है going पर to be नोल्बू paying स्पेशल है. dividends for the side of K1. They're going to have the sight lines on everybody. And this is what you have to do, right? When you have a position like King this, you left. have to fully King capitalize. You Thunderdogs might steal not कर get दिया. it for the rest of the entire day. So if you're K1, you need to get every बे single कोई नहीं elimination you है. possibly can. Top Top is still alive all top by का his गेम lonesome. चले And then बेबी. Dossier's tires are gone. Trying to close that gap a little bit. They are in the play zone, right? Looking at the circle shift. टॉप on तब phase से eight. अकेला They're बचा है looking ना. good. The circle's अबे gonna be shifting. It's going to टॉप be mainly है. on the compound हल्के section में नहीं. of बेस्ट प्लेयर इन द Thundertalk. वर्ल्ड है उधर. So they don't have to move, but Goat, what's ये going ले, to be top their move? पे Are भी they going to zone go for है, wide, top पे eastern भी zone है. rotate, right, trying to make it onto Thunder Talk directly, maybe push Furia out in the open? Goat is the team that is currently in the hot seat, and they just have 30 seconds to work with before the circle forces them to नोल्बू make the कंसिस्टेंट play, यूनबिन का or they will टीम get taken out by that blue zone tick damage. टाइम अबे टाइम का The top स्पेलिंग is ये still क्या है? alive, टीम man. He's still there. टीम He's टीम able to snake his way in, and if he's forgotten about, who knows? Maybe a top 3 is possible for Aurora. अबे देखो टॉप तो वहाँ पे सरवाइव कर जाएगा It is क्योंकि as K1 फ्यूरिया puts some कोने shots, को मार रही है, कोने even फ्यूरिया more को मार shots रहा here. है They gotta start और being बीच में careful टॉप with अपना their amount of बैठा है. utility, though. They need to get those eliminations, apply that pressure,
और उधर टॉप एकदम लास्ट तक बैठा रहेगा at this यार। point. Beauty Pull up throwing कर some रहे क्या? smokes, trying to make it to that road, that rock there.
trying to take out Top. And Top No with way! the shots! Getting two of Furia. दोनों किल्ले मिले टॉप को. That is how you do it there. Oh my goodness, the angle's so good. But Why? too much pressure from K1, and it's K1 to eliminate all of these squads. 8 points so far. They are looking solid going into the end of the game here. I was a believer there for a few seconds. I was like, no way, Top is making it happen, but it was a bit too much being chucked his direction. He does get taken out in top 6, top 5. Will be going away of Fury now. 4 teams remaining. Nongshim Red Force, K1, Goat, and Thunder Talk. And Goat, best player in the world, bhai. Best I player was in the expecting world. maybe them to go to the East on Thunder Talk directly, but no. They want to send it straight on to the South Korean team. It's going to be focused making pure. the entrance here with the Pure. shotgun. Yes, ringing out throughout the building, finding one. It's going to be Hyunbin, but it's just too much for him to bear. Nongshim Red Force take the win and survive as a 3-man team. There Endzone. we go, and now we're Oh going to bhai see Endzone hai. K1 TT continue बीच to में. apply that pressure onto Thunder Talk and Nongshim चलो Red चलो Force. किसका chicken? This is their game किसका to होगा? win. K1 का होगा K1. Let's see how this is going to play out. Now we're now in stage 9, folks, the last K1 zone, K1 as it will be creeping on in. If you're K1, all you got to do at this point is just apply that pressure, let the blue zone do the work for you, because Nongshim Red Force and Thunder Talk are going to fight each other, and that's exactly what's happening. K1 Exactly, you just have to wait it out. If you can get a few lines of sights to get extra point elimination-wise, then just send it. Take it. One actually gets stolen away by AJ. That's huge. AJ! To get it done. Actually sitting, if you can get on top of that roof, खेल पाएंगे Neyoo भाई. yeah, look at Passion's angle. He knows. अब तो लग रहा है भाई OR और TSM ही comeback ला के दे And he's पाएंगे. trying to deny that. Passion literally might be locking down this chicken dinner for K1, and we know अरे भाई इसके पास they तो वो है. really need it. Though there's still a hovercraft in this game, Hot Jukes. That could be throwing a span in the works here. Fizzy's hovercraft has destroyed. यार. Zed's गलत finally उतर गया. shutting that down, Okay, but so easy is gone, and now it's all up to AJ and Sitting against K1. Two teams at the bottom of the leaderboards. Both these teams need this dub. K1 has the advantage positionally, but you can't count out Thunder Talk Gaming just yet. Nice shots there from Sitting. 1v2. And now it's only one player left. It's Passion versus Sitting and AJ. I would say if you can, yeah, just go ahead and confirm those points. You never know if Passion gets the 1v2. दोस्तों क्या spray transfer करा ये? Elimination points. So Passion peeking behind that shed, trying to go back into hiding. He's got himself the DBS ready to just pump them right in the face. Pure. Talk, they know the center of the circle's favoring them. Passion trying to go for the jump shot, but it's just not going to happen. Thunder Talk going the entire way here on Game 2, Day 3 of the PMMI group stage, and finally get himself their chicken dinner. And you know what? They were in the middle pack of the rankings, Hot Troops, and this game alone might be pushing them right into those grand finals. Wow, Thunder Talk, what a way भेंचो की to जानवर win है क्या it, guys. भेंचो? I mean, I gotta say, they were at a huge disadvantage there. Sitting, though, getting इन जानवरों से it done लड़ना है even हमें if जाके they won, they're international में. not too happy about that one, obviously. That was their game to win. They know it. But they're going to have to try to do it in the later stages. Still not a bad performance from them. They are going to need to do great for the rest of the day if they want to make it to the finals. But it's always इन जानवरों से लड़ना है हमें. that is at the disadvantage, make the play, and take बाबा. chicken dinner. डर It लग was रहा है such बाबा a मेरे को. massive team-wide effort from this team, by the way. AJ was doing amazing stuff. Sitting got the 2 players down, as you said, at the end of that game. I want to do He was which is the doing best so team much heavy right lifting now to in make sure South that Asia chicken region. dinner was locked in for this lineup. I don't know. I don't know. Straight up मैं PL तो finish अरोरा line को for support China. करता You हूँ. had 2 teams. You had your side of K1 and you had the side of Thunder Talk, and of course looking at the MVP, it is going to be the man himself, AJ. No knocks because he takes no bloody prisoners. 4 eliminations though. AJ and तो भाई also mock कर रहा है over बे, ऐसा लग रहा है. 31% team Chat. contribution. This man is an absolute legend over in China, and he's bringing a similar level of heat here on the global stage. Let's get it going. Mock कर रहा है भाई ये. AJ popping off in that one. They secured that building, and it was a hectic one. There were so many पूरा mock squads कर in रहा that direction, but they were able to hang on, and that's what it's all about, right? You just utilize your position to the best of your ability, and if you can get that opportunity to make a big Mogging play, skills. you take it, and you're able to get the win here. AJ. As Federales were. क्या देखे? That's fun. मजा आता है इन चीज़ों को देखने में कि आखिरी सेकंड अगर कोई आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए और ट्रैक चला जाए आपके नाक के नीचे से, मगर आप 12 फिनिशेस हैं टीएजी के पास. They're looking super good. इक्का-दुक्का फ्रैग निकालने का और अगर मौका रहेगा तो चीज़ और बेहतर ही हो सकती है उनके लिए. मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे बढ़ें, क्यों लगाओ, थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाएं
हल्का एक्सटेंड करने का, ओवर एक्सटेंड आप कह सकते हैं इफ यू वांट, बट अभी मौका तो है। लीजिए, ये प्रयास किया, गोली लगी, ठीक है, उनको नॉकआउट किया जाएगा, बट यू हैव दैट कवर, आप आसानी से अपने को रिवाइवल दे सकते हैं। दूसरी तरफ आपने ये जो बिहार से बाय द वे हेल ना ब्रो, डाउन करके रखा, बिहार से नहीं है वो, लखनऊ से है। कंफर्म आई क्विट बिट बाहर, और अब टॉप 3 के अंदर एंट्री हो चुकी है टीम एपेक्स गेमिंग की। और एपेक्स गेमिंग के पास वो मैन एडवांटेज भी रहने वाला है। अगर हम बात करें टीम चॉइस की, 9 टोटल फ्रैग्स यहां पर आ चुके हैं। सर्कल लग रहा है काफी कुछ कहानी बयां। भाई यार ये कहां बढ़िया जगह पे रहता है भाई। देता हूं, गांव चलते पहले, बहुत जना अबे तो बहुत बढ़िया जगह पे रहता है भाई। चले जाओ, मेरे को मजा आता है इसमें। तो दादा भी ये एक्सप्लेन कर रहे थे मेरे को कि जो बहुत सारे ओले पड़ते हैं, तो ओले पड़ गए, उस वजह से सेव वेव सब कुछ खत्म हो गया बहुत जल्दी से। मैं खोल देता हूँ, नमस्ते कर दे। अच्छा ठीक है, ये ना पूरा जब पक जाता है तो वॉयलेट हो जाता है पूरा का पूरा। पर अब यार चली तो सही में भाई पूरा है ना भाई, एक्चुअल पहाड़ के अंदर ही रहता है भाई। टमाटर पड़े ऐसे नॉर्मली वाला, वहाँ पे बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे। शाम मिल गया तो मिल गया, फिर कुछ नहीं कर सकते। बट ठीक है, इस बार से मतलब पिछली बार से कम है शायद, क्योंकि वही ओले की वजह से। बट देख रहे हो, हाँ ना, तोड़ के निकाल के खाना, सांप वाप का डर ये नहीं मैं करता ही करता हूँ, भले ही मेरे पेड़ों को जरूरत ना हो। वैसे ऐसे पानी देना नहीं होता इनको, मतलब खराब तो नहीं होता है, लेकिन तो गाइस मैं ना शिमला का रहने वाला हूँ, और पहाड़ में ही रहता है, सीधा पहाड़ के अंदर ही रहता है भाई ये। और नदी का एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत उसको डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। क्या गया अपने को, मिल गया, चलो कुछ तो मिला। अच्छा भाई, इसके नीचे बैठ सकते हैं हम आजन। नहीं नहीं, नहीं इस ब्लॉग में नहीं भाई, चेंज करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं तुमने मेरे को नहीं बताया ये चीज एक्सपीरियंस की है लाइफ में कि नहीं की है। बट बारिश, धूप और रेनबो एक साथ दिखता है ऐसे टाइम पे, जब ऐसा हो रहा होता है। ये देखो जैसे करके बारिश हो रही है और ऊपर से धूप भी निकल रही है, और जब भी मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ूंगा ना, पक्का रेनबो भी दिख जाएगा हम लोगों को। तुमको चीजें मटबे के लिए यही है, शाम हो रही है, मजा आ रहा है। तुमको इसके बाद सुनाई दे रही है? अबे तो जेली इतना ऊपर आता कैसे रहने? कोई तो पक्षी है चल के, ये जेली का घर है, और जेली नीचे से पहाड़ से चढ़ के आता है ऊपर। मजा आ रहा है। लेकिन तो चलते हैं अभी, ठीक है, घर की तरफ। तो बाय कर दे, जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊंगा। हाँ बढ़िया, बस ठीक है। तो गाइस गाय चलते हो तो चलते हैं, गाँव को बाय बाय करते हैं। वापिस आऊंगा 2 दिन में, डिपेंड बिल्कुल भी चलने की। तो चलते हैं, गाँव को बाय बाय करते हैं। गाँव वापिस आऊंगा 2 दिन में, डिपेंड करता है इस व्लॉग पे कैसा रिस्पॉन्स रहेगा लोगों का। क्योंकि भाई जितने लोगों ने मेरे को डीएम किए है ना कि भाई अपने को गाँव का व्लॉग चाहिए, मैं तुमको बता नहीं सकता कितने सारे हैं। तो भाई अगर बढ़िया रहा व्लॉग, चलने की हालत, यही भाई मेरे को बेस्ट चीज लगती है पहाड़ों की, मतलब कैसे। अच्छा जेली मतलब रहता शहर में है शिमला के, और ये इसका गांव है पहाड़ों पे। यही भाई मेरे को बेस्ट चीज लगती है पहाड़ों की, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, बट भाई बहुत बहुत सुंदर है। सो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को मजा आया होगा, सब कुछ फन जितना भी तुम लोगों ने देखा। जो अपना 4 लेन जो आ रहा है ना शिमला में, सीधा चंडीगढ़ अभी बहुत जल्दी पहुंच पाओगे, समझ रहे हो? ऐसा एकदम से बिल्कुल ऐसा घर के सामने। ओके ये मतलब शहर में रहता है, और ये थार चला के ऊपर पहाड़ों पे, और ऊपर पहाड़ों पे इसका गाँव है। सिस्टम पैक हो गया दोस्तों मेरा, अभी पूरी रात आवाज़ आती रहती है, लेकिन ठीक है। बट ठीक है, सुंदर भी लग रहा है। अच्छा यहाँ से सोचो फ्लाईओवर आएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? ऐसा पेड़ चो ऐसी जगह पे मैं रहूँ ना, नहीं रे, बट ऐसी जगह पे मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, अकेले तो मैं पागल हो जाऊंगा। बट पहाड़ी लड़कियां बहुत सुंदर होती है, मैं सुना हूँ और देखा हूँ चैट। तो यहाँ से फ्लाईओवर आ रहा है, बाकी वो सब कुछ तो चलता रहेगा। बात इतनी सी है कि तुम लोगों को मजा आया हो होपफुली ब्लॉग में, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम रह सकते हो चैट ऐसे जगह पे, देखो एकदम यहाँ से सोचो फ्लाईओवर चैट, मैं तो रह आएगा तो कितना ज्यादा अच्छा, बट कोई एक गर्लफ्रेंड हो अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? ऐसा तो यहाँ से फ्लाईओवर आ रहा है, बाकी वो सब कुछ तो चलता रहेगा। बात इतनी सी है कि तुम लोगों को मजा आया हो होपफुली ब्लॉग में, और अगर तुम लोग बट देन मैंने ऐसा सुना भी है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट भी, कनिंग होते हैं, कनिंग
पहाड़ी मैं ऐसे लड़कियां व्लॉग बहुत और लाऊं। कनिंग होते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करके जाना है ना भाई, बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को। और क्या था कि लाइक करके जाओ, लाइक भी करके जाओ। और गांव मतलब अभी हूँ घर पे कुछ दिन के लिए, तो गांव आता जाता रहूँगा, तो व्लॉग्स तुम्हारे लिए लाता रहूँगा। एंड लास्ट चीज़ ये कि एंड में जहाँ भी मैं दिखता हूँ, जेली की दुनिया, मस्त दुनिया, स्पैम कर दिया करो। बाकी तो यही है दोस्तों। It's a team-wide effort, and I'm loving the way E-Arena have been playing so far this event. आज एपेक्स गेमिंग ने रिकॉर्ड बना दिया मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम पेज इन आईजीसी इन इंडिया। कितने फॉलोअर्स है? कितने फॉलोअर्स है? कॉर्पोरेट व्हाट डू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज ईट इन लोअर परेल? काय बनवू तुम्हाला? काय चांगलं तुमचं बेस्ट? माझं सगळं चांगलं आहे. तर आताची जी खाऊ गल्ली आहे ती जरा वेगळी खाऊ गल्ली आहे का? कारण ती अप्पर आहे. काल अप्पर आहे. नॉनव्हेज खातोस व्हेज कधी खाणार? व्हेज थोडा वर्थ असलं पाहिजे की दाखवायला लागेल. दोन आहे हा म्हणजे क्या है खाना भाई? 1068 के और क्या है? मजा आता है। अरे मेरे को भाई मैं इसका व्लॉग भी देखता हूँ पता है गाइस। तो स्वागत है वापस से एक बार। मैंने इसका एक व्लॉग देखा था मेरी साउथ इंडियन मटन रस्सा। ये देखो ये तो गाइस मुझे अच्छा तो लगता ये है दो इसके मसाले व्लॉग डालने के व्लॉग 15-20 मिनट छोड़ देने का है। वैसे भी महीनों को आने के लिए टाइम है, छुरी लाने के लिए घर पे गया है वो, तब तक आप मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। देखो ना कितना ये है भाई ओजी शिट। ये सब देखने में को अच्छा लगता है। कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जो है जैसा है एकदम रियल शिट, रॉ शिट, बढ़िया है एकदम। गॅस परवडला रे, एक डेंजर आहे बायका कशा करतात आजी बिजी काय माहित। आईच्या मेरे गावात को बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरे को ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये बाबा नको देऊ त्याला बाबा नहीं यूज कर रहे ना, तो इसका अनफिल्टर्ड एकदम। ये की बस हो। और मैंने इनका पहले भी देखता था। यार कभी यार कोई इनको ये वीडियो भेज देना यार। यार कभी हमें भी बुला लो यार, ऐसा बैठ के मुझे खाना है। मालू मुझे भी खाना है यार कभी। गाइस फाइनली आग फोड़ने के बाद अब इसको ढकने का वक्त आ चुका है। इसको ढक देते हैं। अरे भाई मैं तो पूरा पेल दूं भाई, पूरा पेल सब एक दूं। साथ खाने को बैठेंगे मेरे भाई, पकड़ो। महीनों को बैठने तो होना चाहिए। नहीं मैं अलग काट लेगा मेरा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं पूरा मटन इसमें डालूंगा। हिल्ला पोंडा कहाँ रहते हैं ये चैट? मैं पलटी में। तो गाइस फाइनली देखो लींबू वींबू मारा जा रहा है और हमने ये केरला कर्नाटक वो साइड की ये सब स्टाइल ली है। हाँ ऑलवेज वेलकम यू अंडा पोहा को। अभी गाइस हम टेस्ट करने जा रहे हैं। एक बेचारा हमारे में से खाना नहीं है, नमक कम रहेगा तो मुझे बताओ। वाह कसम एक नंबर बना यार। मालूम मिस कर रहा है बच्चा। कैसे वाटली गाइस तुमको ये कैसा लगा? प्रॉपर गावठी देखो ना एकदम। थोड़ा अजून शिजायला पाहिजे माहिती का? शिमन का दोस्त एक टाइम पे अभी नहीं है। डाळ पण नको मजा येत नाही. चांगलं जाएंगे हाँ एक नंबर आला. मटन मस्त दिला गाइस बहुत मजा आ रहा है रे। और
ऐसे पूरा ग्रुप कब एक साथ खाने बैठेगा? पहिल्यांदा बसलो आपण ग्रुप. हाँ आता कसं कोणी घास मारतो साईडला होतो. गाइस, तो फाइनली आपने देखा रहेगा चूल्हे पे का मटन बहुत अच्छा रेसिपी बना, टेस्टी क्यों? बना, आप भी बनाए खाओ. इसमें कौन सा भी प्रकार का वाटन नहीं है, कुछ नहीं है. क्यों? अदरक लहसुन पेस्ट और वो जो मैंने मेरे को लगा मसाले अभी भी डाले थे फ्रेंड वही, से ही है, बाकी वो कुछ तो- नहीं डाला, लेकिन टेस्ट बना. ऐसे दोस्तों के साथ एक साथ बैठ के खाओ, मजे करो, लाइव एक नंबर. एंजॉय से जियो. तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले संडे में, क्योंकि मालू जी को खाना है तो वो बोल रहे जल्दी जल्दी यार बंद करो ना, मेरे को भी खाना है. तो वीडियो इधर पे एंड करते, मिलते कौन सी तो भी और आरजोड वाले रेसिपी में. अभी के लिए बाय बाय, चुम्मा, ये खत्म बाय बाय. वीडियो आएगा, एक खत्म होने के बाद एक वीडियो आएगा. हाँ मतलब पर्सन कान भरते हैं ना वही. ओके ओके ओके. कार कार है. करजत में रहते. श्रीमान भाई कहाँ से? वो कहाँ से? मुंबई में करजत से. वो कहाँ रहते मुंबई में? करजत. क्या स्पार्की स्पार्की क्या देखूं? ये हाय गाइस, वेलकम बैक. तो आज भी हमारे पास काफी तो आज से कुछ दिनों पहले क्लचगॉड ने बात किया था उनके इन गेम एंगर इशू के बारे में, दैट वो अपने टीममेट्स पर काफी गुस्सा हो जाते थे जब भी वो कोई नहीं भाई क्या प्यारे, तब जाके ये चीजें पॉसिबल है. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया. एक दूसरा दिन है मेरा, बस 20 तारीख जाने दो. 20 दिन की बात है. उसके बाद 7 दिन मैं बूट टाइम जा रहा. 7 दिन में ऐसे कंटेंट निकल के आएंगे ना भाई, हम लोग मिलके सारे, मजा आएगा आप लोगों को. सिर्फ मैं नहीं, पूरे हम जितने भी है क्रिएटर्स, अभी तो कम क्रिएटर्स है, 3 ही है, और माहौल बना के आएंगे पक्का. नाउ बात करें न्यू के बारे में, तो आज से कुछ दिनों पहले क्लचगॉड ने बात किया था उनके इन गेम एंगर इशू के बारे में, दैट वो अपने टीममेट्स पर काफी गुस्सा हो जाते थे जब भी वो कोई मिस्टेक्स करते थे. तो न्यू क्लचगॉड के इस इशू के बारे में बात करते हैं, जहाँ वो कुछ ऐसा कहते हैं. ये लाला लौड़ का ना ये वाला माइंडसेट ना बहुत गलत है, पता है. इसको लगता है मैं रुला दूंगा सामने वाले को तो अच्छा खेलेगा. मैंने इसको कितने बार, पता है चैट, मैंने कितने बार मैड किंग्स में इसको बोला है कि लाला तू ऐसे पहले नहीं था. लाला ने मेरे को लगता है ऐसा ठान लिया था कि मेरी इतने टाइम तुम लोग ने मार रखी थी, जब मतलब डिमोटिवेट हो गया रहेगा. और मैं उसको बोलता था लाला को कि लाला तू ठीक है खराब खेल रहा है तो तुम गाली दोगे उससे. तो जीगॉट टीम के साथ नहीं थी तो इसी क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए बहुत ज्यादा खुश था. मतलब वो लोग जिस चीज के थ्रू सफर किए है ना, भले पर्सनल लाइफ थी, तो कंटेंट वीडियोस बनाते हुए दिखते हैं, जबकि वो एक दूसरे ये क्या भेंचो, तो ये तो देख रखा हूं मैं तब से. स्पार्की देख रखा हूं यार ये. देख रखा हूँ वही वापस. बेंचोद कौन है बेंचोद? ये स्पैम करता है ये स्पार्की. अरे तुम दिमाग के थोड़े पैदल हो गया. स्पार्की देख. न्यू कार भी ले ली. Yo guys, what's up? Welcome back to a new vlog of Sahil on YouTube channel. काफी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ एंड आज का दिन भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नई स्पोर्ट्स का. YouTube देख सकते हो, ये कलर इतना सुंदर है, इसका जो आई कैचिंग कलर है अमेजिंग है वो बहुत. इसके भी 2 फ्रेमलेस होते हैं और ये भी बहुत तेज होती है चलने. कैसा लग रहा है? ये भाई क्या बात है. ये कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती. हाँ ये देखो गाइस, लेकिन में खासियत है. इसकी आवाज देखो, AK वाली है. हाँ ये देखो AK-47 की जो आवाज होती है, क्या? हाँ AK-47 वाली आवाज आती है. खड़ी है, एक पीछे भी खड़ी है सेम कलर में. सेम कलर में 3 कैसे आ गया सेम? ये अभी काफी, इसमें भी स्पोर्ट्स मोड आता होगा. स्पोर्ट्स मोड आते हैं, ये सारी गाड़ी के मोड्स लगे हैं. तो वो प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा है बट देखो 1 CR के नीचे ही है, बट ठीक. टॉप का आवाज देखो. आई ड्रोव माय ओ बॉय. क्या What?
भाई इसमें ये वाली कार है, पूरा स्पॉइलर सब चीज के साथ। What the hell? Car business. Oh, cool. Yeah. Okay. Ice Hoji. Why? The heck? I wonder what's in there. Oh yeah. बाप रे बाप, ये सपना होता है यार इधर। Draw here to click a picture Yeah. near the cypress. I know you were stuck behind those cars. Oh yeah. So you couldn't do anything. Is it a manual? No, it's automatic. But I see it's a Mante edition. So There's cows moving over there. Yeah. Yeah, of course. Thank you. सबको लेना है भाई। क्या बनाया इसने भाई, क्या बनाया ऊपर से। Excuse me. Yeah. Can you take a picture? Yeah, of course. Thank you. I'm not sure what settings to do, but if you can. I'm gonna take a whole bunch, okay? You do different poses if you want. first stand, Shell. You too. I'm more excited about the car than the. I know. क्या? The cars are. Oh. I started. Thank you. बाप रे बाप, क्या गाड़ी बनाई है। भाई भाई भाई, क्या गाड़ी बनाई है चैट, क्या गाड़ी बनाई है। फक। टॉप करने में चले बेबी। अरे करो ना स्टार्ट बाबा। इतना डिले क्यों है? जिगोड आरएल कर रहा है आज, जिगोड आरएल कर रहा है। What the heck? कहाँ आरएल कर रहा है? आरएल मीटअप। Okay. जॉर्जपुर का ही एरिया है, जैसे कि हम बात कर भी रहे थे। यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट तो लिया है कीचो स्पोर्ट्स ने, बट हर्ष के रूप में कैजुअलिटी G4 स्पोर्ट्स के खेमे में हमें देखने को मिलेगी। 3 मैन है, थोड़ा सा अब यहाँ से पैसिव अप्रोच उनके साइड से होल्ड करेंगे, पूरी इंटेल गैदर करेंगे, उसके बाद ही कोई इंडल्जमेंट किसी फाइट के अंदर देखने को मिलेगा। बट कंटेनर्स के अराउंड हमें आईको 8-बिट के प्लेयर्स वो दिख रहे हैं। सारंग देखना होगा कि थर्ड पार्टी में वाकई वो टीम इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिटी एरिया में भी बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद है। वहाँ के बीच वो रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। स्नैपगॉड के अगेंस्ट एक कनेक्शन बना, कंफर्मेशन वो अभी हुआ। पाशा भाई एक बार जिगोड। अरे यार
रुको 39 मिनट। इससे बातें सुनी वो सब तो बताने के टॉपिक है नहीं, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप स्टेज पे क्यों नहीं हो, मेरा कैंसिलेशन ऑन करो। अभी अच्छा है, अभी बताओ, इतना बताओ। जॉनी के लिए तो नहीं बोला, अज्यूम ना करे ना, जॉनी के लिए कुछ नहीं है। जॉनी कहाँ पे यार, जॉनी के लिए क्या बोलूँगा। जॉनी क्या, जॉनी थोड़ी कुछ करता है। जॉनी के साथ तो सब चिल है, अपने लॉन्डो के साथ हमेशा चल रहेगा, मेरे को पता। अरे काके कितना अमल है, ये लोग बोल रहे हो। अभी जैसे नियो कुछ भी बोलता रहता है, लाला कुछ बोल देगा, मेरे को इनका इतना बुरा नहीं लगता ना, मेरे को कभी बुरा लगेगा, इतना कुछ बुरा नहीं लगता मेरे को। ए भैया तेरी कैंड मारेंगे गार्ड, बुरा तुझे बुरा फील करा है साढ़े। जॉनी तो फिर कुछ बोलता भी नहीं, वो तो अलग ही बात है। तो अपने बंदों से कभी मेरा वो कुछ है नहीं। अच्छा, बहुत जितने फ्रेंड्स रहते हैं ना, अगर वो तुम्हारे सच्चे दोस्त रहेंगे ना, तुम्हारा दिल से वो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। उनके लिए वो फेम वाली बात नहीं आती कि भाई कोई बड़ा है मैं छोटा। क्या Don't give lectures, bro. The fuck? Players have already dropped out of the plane, and we got a lot of squads that need to fight tooth and nail here, Max, to try and make it into that top 15 and keep their dreams alive here in this tournament. प्रेडिक्शन दो, जिससे प्रेडिक्शन दिया उसको मैं सबसे महंगी वाली सुपर ये दूंगा। It's going to be KSG, one of the lowest teams in the rankings, against one of the teams that pretty much locked in their spot already for the finals. It is going to be Aurora Gaming. What a weird hot drop to go for. And KSG, I mean, we said, right, if you're so low on the rankings, Ultrix, you need to go hard or go home. And it seems like right now for KSG, they want to go insanely hard on the side of Aurora. I like it. That's how you do it, man. Let's turn the difficulty up to 10, right? Out of all the teams, let's face Aurora off the rip. Let's see what they do, though. Are they going to go for the fight? Are they going to just loot and scoot, as we say? Or are they going to loot and shoot? I think they want to loot and shoot, but I mean, actually, मेरे को it's वो would अबे be a really guys bad situation for उसको KSG क्या बोलते हो, because देखो वो look at the स्टिक team जैसा from रहता है, Aurora. They got two players, Doc and Reefus, to the western side. एक बॉक्स में आता है ऐसा Two of the players, स्टिक जैसा रहता है और चॉकलेट स्टिक जैसा रहता है, चॉकलेट स्टिक क्रीम चॉकलेट स्टिक क्या बोलते हैं उसको। And they actually, by doing so, are going to catch the loot truck. But this will be a little bit risky because you have to go on the road for the loot truck. And looking at Doc and Reefus, they're crossing in the open. What is this fight, man? What's going on? Waffy. They couldn't get the loot truck. They wanted to secure it in that back corner, and they would have been having it. But no, never mind. Now you got Doc looking for some off angles. Chalky. Reefus in a 1v1. It's pump shotgun versus pump shotgun. Ooh, fake pin pull. Crack shot bites at it a little bit, but still not falling for it. Nope. He knows what the game plan is. Oh, Reefus gets the better of him. And the instant confirmation, rest of the team is not there to support him now. Oh man, KSG just feeding the beast that is Aurora. This is what I was scared of for KSG, is they have two different angles to push you from. And KSG dropped quite split between all the different buildings, so they're just giving multiple 1v1s or 1v2s to the side of Aurora. C4 in the hands of Zyol, gonna go for a quick chuck here, swapping on over instantly to the UZ. Where the team does get some decent damage onto Tianyu. But I think that this is game over. Dropping on down from the heavens here, looking to find that fight onto Zyol through the door. And he wasn't even looking, and Zyol still gets the win with the pump. My man's just built different, as Z-Boy now left in a 1v4 scenario. And you know what? If they get it, I think they're just going to chase down that loot truck because they got the win. Like, we want that loot too. As Z-Boy, 1v4, he's blinded up here with a flashbang. With the Uzi, can he get the 1v2 on the staircase? He does get one knock instantly, going back into hiding, but he's got no meds to work with. One side दिया रे इसको। Oh! Oh, the flash! Oh, you got the fast! Oh, you got top of all players! That's just, you know, he's so bad. He's like, you gotta be kidding me. Wow. KSG, अबे डब्बा ही डाल दिया one भोसड़ी। player out of all that.
नहीं भाई देख लेना एक बार विलेज को की चला देख रखा है. He's like, I'm taking you down with me. in the डब्बा ही डाल दिया भाई इतने लोगों के बीच में. I think it was a terrible play from KSG. Why would you want to try and take away this location from Aurora? That क्या made it known now, right, that they love dropping Severny. And this is a team that you never know. They could have some great fights or some terrible fights, but you don't want to take that risk. And now they got just 1 point on qualified है ना Aurora तो qualified है. 1 point in 24th position. I would say with this bad performance, top 15 impossible. To do that in 3 games, you would have to see one of the most insane step-ups from an individual team that so सड़ी far का done खा गया really सड़ी का great साला. value outside of the first डब्बा round डाला. today. I feel like this is nail in the coffin for KFG. KSG. yeah. What do you think? It is. You know, I think it was a bad play. I do like the fact भाई that Regnum if you're KSG and you're in 21 points. Hold on. क्या कर रही है influence Suraj? Suraj? A second as we take a look at this. Okay. ये क्या किया Federal ने? On to Federal. You know, actually, never mind. Wild going to be creeping around this corner. And no, I think. Okay, all right. Now these guys are committing. They're deciding what are we going to do? Are we going to push this? Are we going to not silence it? We are go, go, go. Full sending it on to the Wizard Tower. Pedrino's all by himself. Yep, it's going to be a battle. Influence Rage versus Regnum Faria. The fuck, bro? Personal. We're jumping out in the open. Wow. Silas making it happen here with the mini. And now, the little boy got the confirmation onto Loxy, so they are going to lose 1 player. But let's see what the rest of Regnum Faria could do. Little boy is just stuck in the open. Yeah, no way he makes it out. Yep. So Influence Rage again falling apart here, man. Well, these early fights we keep seeing, man. There you go. Silas That's the end of 1v3 the by line. Influence Rage. The coded IGL steps up. Done this game. Only 1 elimination secured onto Loxy, very similar to the likes of KSG in their hot drop in Severny. Yeah. I know it's a good position. तुझे ये लगता है जिगाड़ को हर 2 मंथ में घर जाना चाहिए ना? जाना चाहिए यार घर घर आना इम्पोर्टेंट होता है. पर्सनल ब्रेक, मी टाइम सबके लाइफ में चाहिए भाई. Sent 2 players to scout outside of Pachinki. There was Novalo and another player, and I thought they were going to third party from a distance. Because it's a weird fight, and you can very easily get that engagement from a distance if you want to, and snatch away a few points. I don't know what was going on. And actually, just to go on a different topic here, Sunan does have a nice Lynx AMR, so he did get himself, I guess, a loot truck. BTR did steal away the loot truck from Aurora and KSG, as it was like literally left on what, maybe 10 bullets worth of HP. Wow. And BTR got all of that loot truck, so Aurora, they're actually kind of on the minimap, sending it to BTR towards the northern western side of the map. Are we going to see Aurora versus Bigatron up north? It could be happening. Definitely. Majumdar में पैसा इन्वेस्टमेंट किया कोई रिस्क नहीं है ना. To be able to get a मुझे क्या पता like भाई? that, and it was crazy तुमने because किधर they करा almost मैं कैसे had बोल it, but सकता just हूँ? not enough ammunition to lock it down on the side of KSG. Oh, just to wrap up what my thoughts on KSG was, because that fight happened. Oh yeah. I do like the fact that, you know, considering our 21 points, you should get active early. भाई टैग के right? व्लॉग में 'Cause you लास्ट need a चांस ton of वाले points. जॉनी It's just the decision to drop Severny, especially looking at the playing path, knowing that military is not directly on there. You know Aurora is going to drop there. So, I mean, to pick a fight early, a good strategy when it comes to points-wise, but against Aurora is wild. My main issue is लोगों ने if you APG want to go क्यों for a leave hot कर drop, दिया fair भाई? enough. You know what? If that's really your game plan and you want to commit to it, fair play. I respect it. But the way they did it, Hodgix, I feel like was just so poorly done because they don't even set up any player to defend the road. Did you see when Reefus and Doc just literally walked across, no smokes? That should not be permitted by KSG. And then they just get fully corralled, sort of surrounded. And they can't escape. And they get picked off one by one. And eventually the final player falls. And it's just a non-game straight up for KSG. Yeah, if you want to go for the hot drop, I'm fine with it, but you need to understand the layout of the compound you're dropping into and be ready for the team against you that might go or on the offensive or on the defensive, and you need to respond accordingly to that play. KSG, I feel like this is going to be a great learning experience because, again, a lot of these players, this is the first time for them playing internationally. You're going to Paris. They need to know that these guys, they mean business, and a hot drop is going to be instantly shut down if you don't come out with an insanely good plan from the get-go. I feel like I'm being very harsh here, but like no, you have to. You need to be prepared when you're going to go for hot drop. Teams will shut that down right away if you do one single mistake. Yeah, and it's just so unfortunate, you know, considering that with that game, it's pretty much locked them down to
it being all over for them. Well, at least the pressure's off, you know. And sometimes we have seen when they have no pressure, they just start playing their own game and can turn things around. Oh, the AMR. Let's see. Can you say that again for me? What was that? AMR. This became a demon. What was that? Anytime I see any kind of sniper, I get so stoked, man. Because to me, there's nothing better than a crazy flick headshot. Weibo getting into a KRX. KRX on that cutoff position. They need these points. Weibo, 61 points on the board in 11th place. They got to find a way to come back from this one through 33Z. Tries to catch the nade. Just too short. Come on. Bay is going to get thirsted here, yeah. He's not careful. Sook is joining a little bit late for the fight here. Bay is going to be almost impossible res to get, trying to flush it out with the M249. Unfortunately, he doesn't have the great angle here. So much utility. नींद आ रही है तो सो जाना पैसे को लेके the game-winning compound of last game. Talk did eventually secure. देख रहा हूँ मैं Oh, that's a किसको नींद आ रही piece है? of utility. TRE getting it done now. It's down to Sook against the world. He's got himself that JS9 against. अबे यार सुक का भी पूरा एकदम अच्छा मैच नहीं आ रहा in the Esports ये तो choke हो गया lobby. It's a 1v3 right now, trying to get TRE. Just get so much damage, just get that final bullet before the reload. Now turning it down into a 1v2. Beautifully done there. Did he get the reset? Gonna go ahead and get the reset. What was that nade though? The Molotov, whatever it is, they're in trouble. Yep. 33Z gone. And Soup's gonna have to back off from this one. He needs another. Oh. They're not gonna give it to him. They're not gonna give it to him. They're gonna reset. You got to push it. Otherwise, they're going to get the two players back up. You need to get on the offensive here, Sook. But I feel like he knows he's lost that opportunity. He's lost that chance to take this 1v2. Now it's going to be turned straight back into a 1v3. There's another nade coming his way. He's going to get some good damage, actually. 100% worth damage. Pasha, where is Gillen Viro? I don't know. Weibo. APJ also on the team in China called AG, and according to PUBG rules, two teams from one org can play. Below them here, Hodrix, like your Thunder Talks, your Furious, your KRX, to overtake Weibo and push them down under on the rankings. Wow. What a great job there. Yeah, Weibo still in a good position to make it into the finals here, but, you know, we're going to have to see what they do in the rest of the day. But man, what a lot of. चले जो न्यू व्लॉग्स बनाना कंटेंट भी हो जाएगा कहाँ? Yeah, I am quite interested with the amount of. That during billion करके एक player था एकदम OG times बढ़िया gun power थी. Yeah, teams seem like getting very desperate for points, which I don't understand. I think so. This circle is okay. This is bad. Yeah, this is a bad zone. I mean, and that's the thing though, is that every early fight you have, it makes that game a little bit easier, right? Because now you have 3 teams out. Best device बताओ Pasha. A lot more space. I mean a lot. Best device. So crazy. I don't know. अभी कौन सा चल रहा है? Of level of play. LAN पे कौन सा device से खेल रहे हो लोग? Zone stage 5 with all teams alive, it's just that much more difficult. So having 3 teams gone, it really just lightens the mood as we get into the end game here. We're way closer to getting placement points, right? Just got to survive a little bit more. But now with a potential Milta City finish on the horizon, team's got to start to think, what are we going to do? Are we just going to send in the city and just hope the circle keeps going there? Are we going to play on the outskirts? I actually really like the position of, for example, of Nongsham Red Force. They're going for a swift entry into Milta onto the eastern edge of the city itself. So I think that Nongsham, again, slowly but surely I go 15 or iPhone 17 Pro. And I still know this team has more to deliver. And you might be thinking to yourself, Max, man, you're being very critical of a team that's like in top 8. And yes, because I feel like this is a team that could become a champion on the global stage if they play their cards right. But intakes don't have 2 stars on just. I'm being very harsh this event because I want to see these teams in their top tier form going to the finals, and I know Nongsham have just so much more to deliver. Yeah, you know, I love that you preface that, but I don't say it's being harsh. I say it's being real, baby, and that's what you have to do, right? We got to keep it real with these squads because you got to do everything you can to keep your dreams alive here. As only 15 teams are gonna go, and it's gonna be hard. It's gonna. Our hearts are gonna hurt here towards the end because there's so many phenomenal squads in this tournament, and it's gonna hurt to see some of them go. So you really got to make sure that any opportunity you get, you capitalize on it, because those last 2 matches where everything's on the line, it's going to be just so much chaos that it's going to be difficult to predict no matter how good you are. Yeah, I mean, for now, for example, my heart hurts because we saw Ulf get knocked again. We're just not seeing the team-wide finishes that I was hoping to see. It's like group stage of PMGO all over again. Come on, Ulf.
not making it Okay, top 15, TX that ne, would हाँ, be, हाँ, I हाँ, would say that would be TX the single वो time पे biggest जीती थी। upset of the tournament. Even worse than Alpha 7 and Weibo not making it, in my opinion. Because these guys, second place PMGC, second place PMGO S1, come on. We know they can deliver way more here on these games. अबे यार ये headphones की वजह से कभी-कभी They कान do get the reset on that हिलाने का fourth नाम player नहीं that got लेना। knocked. कान Now दर्द if we होता can है। bring back way more points, just get more consistency on the line. As Bigatron, though, a team that has been, you know, a little bit topsy-turvy this event so far, Hot Jukes, 50 points, 16th place. They're on the cutoff. They need to get something done here. Yeah, they do. Man, dude, so many teams need you at this point. It's wild to see. I mean, yeah, just looking at the bottom of the leaderboards there, you can see on the bottom right, Regnum Karia, you got in 17th, BTR 16th, KRX 15th, Ulf down there as well, Enigma Galaxy, oof. Now's the time, in all honesty. Like, you need to put a game up here because, again, ओले I've said it once, कल से I'll say it finals again, भी है ना the इसका last ओ match भाई of the finals day देखने is मजा gonna आएगा be too chaotic to depend on. So, Furia putting some pop shots downrange on the Enigma Galaxy. Everybody right now just अबे अबे यार poking कितना at each एक other, saying, बेंच से hey, एक ही this is सवाल where we're पूछते at. रहते हो Don't even think about coming in this direction. shit मुठ मारते हो क्या सोच के And भी we're gonna get towards that end game. There are some squads that are still outside of the zone, Max. Right? We got कभी-कभी तो मेरे को शक होता है बे मुठ भी Notion मार Red देते Force, रहोगे सोच के Alula. Oh, Alula's gonna have a hard time into this zone. And I talked about it at the start, right? I was like, man, what is Alula gonna do if they don't have that amazing Rondo to start off? And so far, it just hasn't been a lot. It's been a non-day, realistically, for Alula. And they've been trying to also swap a player right earlier today. Didn't quite work out as they were expecting. So it's still, they've had such a good opening day that top 15, for me, there's no way, Jose, they're not going to be making in top 15. कहाँ है अबे ये कहाँ अरोरा वाले कहाँ नॉक खा खा रहे have भाई more confidence in the MENA region when it comes to those Macau Invitational finals. But looking at this zone in particular, teams have already, most of the teams are in the play zone except for, as you said, Alula. ये साइलेंस पता नहीं आजकल ऐसी ज्यादा फोर्सेस वर्ल्ड करवा रहे हैं next to shelter. So that's going to be the next approach for them. But everyone found a building, a compound, a dip, a rock to call home. So now we kind of, it's the calm before the storm here. The next circle, phase 5. भाई legit सब लोग try hard कर रहे हो भाई कोई fight नहीं ले रहा भाई अभी तक Alula in particular, they know नेशनल प्लेयर्स बहुत बढ़िया you have to find a way in the circle. You might just have to force a fight at this stage. दुनिया में से बहुत मजा आता है देखने में available. भाई बीजेएमआई के टूर्नामेंट में इसलिए मजा आता है ना क्योंकि उधर हिंदी में कास्टिंग होती रहती है और वो लोग चिल्लाते रहते हैं बहुत ज्यादा इसलिए मजा आता है इंग्लिश कास्टर्स ऐसे ही कास्टिंग करते हैं कोई भी गेम का हो आराम से ही करते हैं फुटबॉल भी देख लो CS:GO देख लो आराम से कास्टिंग होती है हाइप बीच में करते हैं And they can take a rock here and just wait. Yeah, I think that's what they're going to do. Quake's going to probably take that rock right here. Yep. Yeah, good rock. It's good position. Just got to be careful. It's going to be a nade range of goats because they're going to be hearing that buggy moving all over the place, so they have a good idea of where you're going to be located. आजा भाई viewership भी आसमान जाएगा. Galaxy's position earlier, right? They were fighting next to Furia. They got himself that wizard tower, Harry Potter tower. It's a good spot until you have to leave because you can't hide your cars behind those towers, Hot Jukes. So the moment the circle does not favor Enigma Galaxy, I feel like they're just instantly going to get blown out of the water. Or the tower, should I say. So I'm not super hopeful this is going to be a strong showing from Enigma Galaxy, which they need. 46 points, 18th place. आ रही है तेरे को सोया नहीं जाता बस सोया रे अरे उठ के खाना वाना राइस वाइस खाता हूँ ना तो फिर उनको नींद आ जाएगी यो स्पाइसी हाउ आर यू लॉन्ग टाइम for the side of Enigma Galaxy so far. Spicy. We saw a good sign. You don't miss me, Spicy. The fuck you got busy in life. Goat battling it out here with Alula. Alula need to win this fight. I see you stream so much. Goat need it way more. They're so much further down. Coffee, हाँ यार मेरे को coffee मंगाना पड़ेगा भाई coffee पीना है. And Alula, I think, are going to back off from this. Come on, let's send it. I do like the use of Alula. Good, I'm good. Just kind of go in the opposite direction. How are your matches going? Keep your head nice and safe from the sprays of Goat. Alula, now they don't have the high gun advantage, and I feel like this is a good play because Goat instantly see the BTR. अबे कल अपन ने भाई EWC फॉर्म भरा है chat पता है आपको? And they're gonna apply this rock. Ayato crash will be the होता है one जिससे trying to fatigue get feel more होता है. elevation here on the fight, but Focus will be the first to fall. Now he's going to be in nade range himself. And Goat, अबे chat I like the idea here, Hot Jukes, of trying to go on the defensive versus BTR, but here Focus got way too aggressive and gave them an easy opening. And now the man advantage is headed the way of Bigatron.
Yeah, and you could just see तो Big पूछने वाला था मैं John आप लोगों से getting those sight lines up top. This is outside of the circle now, so this fight needs to happen pretty quickly because stage 5 is going to punish you. Goat need to get out of here. Like, you just got to push a way in. But it's so difficult चल when you're अबे नहीं fighting यार so राइस many खाने different का squads. बेंच Yasser's बहुत back नींद in the आती है game now. So it looks like they had another roster swap. And let's see what Alula can do. अबे EWC का अपन ने भर दिया है In the वॉच buggy, पार्टी trying to फॉर्म्स figure मैंने out where they're going PUBG to के लिए go. भरा है और I Valorant के लिए just भरा see है just so much indecision here, तब तक Max, उसका right? Like, परमिशन they're मिलेगा just तो not पीढ़ी wanting to commit to होगा the ना fight. YouTube पे बहुत खतरनाक At the same time, they're going to have to push somewhere into the next circle. I actually kind of like it because they knew BTR was looking to get involved, so they said, we don't want to get really third parties as we fight Goat team, so they just let it happen, and because of them waiting, actually, Goat get eliminated, and they didn't have to do anything for that. So actually, I don't think that was them being indecisive, it's just being passive at the right time, but now they are being very decisive. Look at that, right in their vehicles, looking to send themselves into the circle. This dip, though, I wouldn't call it a great dip because so many teams are just locked in on that location, and instantly they barely arrived. One player is taken out of the picture. अबे क्या है ये फिफ्थ जोन इंडियन लॉबी चल रही है Which team is supporting? It's Aurora. Aurora. Don't think was the right player. And Which Alula team will do you suffer the support? consequences. Spicy. Oh, look at that. Alula It's getting Aurora. punished Aurora right and now. WBG. Just not able to make things Aurora. happen on their Aurora. second day. Aurora. It's a bad Really Which rough team is start. supporting? Yeah, they're going to have to bounce back. Are you though. asking me about FIFA? They are down I saw your just stories. quick. You're watching FIFA? Nade's coming on down. Can he get a res FIFA, off? it's Oh, mollies are so Portugal close. and France. Yeah, it's only a matter of seconds at this point. Yeah, maybe you got to get it. That's Nope, it. That's it. Yeah. Makes sense. I mean, unfortunately, I do wish they were more aggressive here and just tried to crash maybe on Thunder Talk or on the eastern side of Milta. अभी का lineup Take the China में fight, भी था not इसलिए just try PUBG and की go in lineup the को लगा open दिया because it's just not going to work out for you when literally 4 teams are looking your way. That was just not going to happen in 1,000 years. Argentina तो बहुत though, strong finally है going to have to defend their position. These two buildings very strong to the western side. There's a lot of value here to be found, and E-Arena is knocking on their door, trying to take everything for themselves. It's QXC, top performer from Korea. Got to be careful here as he takes a little bit of a beat into the hands of Mormon. Instant clapback with his own utility, but Mormon will also take up that damage and survive the encounter. But now they've got the man advantage. QXZ first of all, Hot भाई Seat, क्या TRE फाड़ा है and Benny here. Hot Juice, can they survive? the WSB 3v4? बाहर होगी अभी चुप हो Oxy जाओ। FPP got the shotgun loaded. The bounce snake. What? Okay. What a crazy play there. Now E-Arena going to continue to dominate KRX with the shotgun action. Tourney K. Thailand not messing around here. Schweppes with 3 though. Gets knocked. But the team is right there. भाई ये E-Arena क्या मार रही है? When it comes to these team fights, man, they are working so well together. We got another squad fight. It's Bigatron versus. The fuck? अभी इधर होता नहीं और जब होता है तो खपा Versus Thunder Talk sitting, securing those eliminations with that DBS. And that is only one player up left. It's Ray-Z. Gonna have to do something with his nade. Maybe Al-Ula are happy they didn't breach. Al-Ula. What an instant defense from them. Utility. Oh, that was almost going to get Razy. Barely. Just maybe an extra half second there on the cook and he would have got it. But Razy just going to get corralled by Thunder Talk. 7 eliminations and sitting down the competition. Portugal Croatia से हारी तो बाहर है hopefully they will. And look at that. अबे Croatia तो बहुत strong team है बे. It's a bad one here, Hot Chicks, because they still got 4 players alive. And they're fully reset. Oh, but Hyunbin, getting third party as well. Nigma Galaxy. And now you got sitting. He has 6, but that is going to be a stop for him there. Should be able to get res, though. Man, Thunder Talk, not a bad defense at all. But Nigma Galaxy, it is a party of parties here. An absolute fiesta as everybody hunting down भाई क्या हो रहा है ये? It's Nigma Galaxy going to end up on top. But wow, everyone wanted this building. क्या हो रहा है मॉडरिच क्या रिटायरमेंट देखता नहीं हूँ मॉडरिच तो रिटायर हो गया ना Well, it's Modric not retired. easy. All the teams that are looking at you are fighting each other. You have Bigatron, you have Al-Ula, you've got also the fight going on to Thunder Talk, and then you got the third party at the very end there from Nongshim Red Force. All taking out each other, and then Nigma Galaxy got the easiest straight up line right into the compound, taking the one. retired है भाई अभी थोड़ी खेल रहे क्रोएशिया से. Strong position up northeast, so loving it so far. है मॉडरिच खेलेगा आज रात को. Decisive than their last game, right, Hot Chicks? क्रोएशिया से. The main criticism on the last game is a lot of hesitancy and unwillingness to commit to a play.
I cannot say that this time around. That was just so quick on the pivot. Amazing timing when everyone was at their weakest. Neyma Galaxy maybe going for the big one. Yeah, there we go. I mean, they didn't get a bunch of eliminations position, right? So they have a lot of sight lines here. This is where they can make a mistake, though, right? Driving around a little bit too much, losing some players and vehicles. Just do exactly what you did before. Stay as a squad, push each team one at a time. Norway भी top round of 16 में गई ना, I guess. Are going to be holding. Oh, this spot's terrible. It's such a difficult. It's a last resort kind of position. So Regnum Kari are just trying to hang on as long as they possibly can. One piece of utility, though, and they're out of here. I mean, I feel like for Regnum Kari, it was kind of a first resort play because they've been here since Circle 3, if I'm not mistaken. Like, they've been here for a very Germany तो out हो गए भाई, so बहुत Regnum crazy seemed like सीन the idea is just to stay there and hope that the circle favors them. आयरलैंड वाले की हाँ नॉर्वे तो राउंड ऑफ 16 हो गए ना नॉर्वे फ्रांस हो गए नॉर्वे वर्सेस ब्राजील है राउंड ऑफ 16 में I feel like they've just expanded a lot of their grenades. You're a long way home. This is Brazil. Not having any of it. You're a long way home. Can't say the same for Coops though, as he's getting it completely peppered behind that tree, and that's going to be Neyma Galaxy down to a trio in the late game. This is what I'm talking about. Neyma Galaxy, all they had to do Portugal was जीत just रही है stay लीग in ले that बादशाह building, टफ है and यार then most likely are going to have to push so just say but my core is right? old now but instead they try to go for an off angle and Coops is lost now. It's going to be difficult for Neyma Galaxy to make something happen. I mean, E-Arena, natural progression of the game would dictate they would push on wild. नेमार नहीं तो मदन ये नेमार को खिलाना चाहिए यार या तो नेमार को जानबूझ के खिला रहे शायद मेन मैचेस में खिलाएंगे वरना भाई अपना बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं नेमार Look at your next step in the game, which might be a crash on Furia or to Milta based on wherever the circle phase it goes, which will be a France की lineup इतनी stacked lineup है इतनी stacked they're getting ready. They're also using up a few of their stems ओलिस क्या मारता है देखा ओलिस को डेम्बेले ने तो अभी हैट्रिक पेला था ओलिस एम्बापे So yeah, instead they're going to try to go for the area. It is super risky, but this is where they're going to go for now. सारे भर रखे उन fight out with लोगों ने Aurora Reefus. Up close and personal with the DBS. That looks like a good nade there. Ooh, just a little under. Oh, it's a stun. It's a stun. Everyone's blind. Reefus getting peppered with that nade. DBS action. Tries to hit that whip. Not going to do it. Reefus down to 1 HP. And that hits him. ओलिस तो क्रेजी है भाई ओलिस पूरा मेरे को पता है उसका फील दिला रहा है टोनी क्रूज का इधर टोनी था ना पूरा प्लेमेकर Maybe he could have kept the flashbang for a little bit later, but this is the fight that makes sense. I was expecting straight onto Regnum Kari for E-Arena. एम्बापे तो बेंच वर्ल्ड कप आते पजेस हो जाता है वर्ल्ड कप बड़े स्विच का प्लेयर है भाई You know what? It's just spam and just get those eliminations. They find one. Now to the अर्जेंटीना भी बहुत स्ट्रांग है फ्रांस और अर्जेंटीना फाइनल से होता takes the dub, and that's going to be E-Arena up to 7 eliminations, making it top 4. But they're going for that chicken dinner, as now the focus is straight onto Furia from Brazil. Yeah, Furia, I think, tried to third-party that situation. Igor drove on out, but no, that E-Arena shut that down very, very quickly there. Nice shots there. क्या बाइसिकल अटेम्प्ट मारी बाइसिकल अटेम्प्ट रहा है वो इसका बाइसिकल अटेम्प्ट बहुत क्रेजी था भाई बट उसके बाद डेम्बेले ने हक दिया था डेम्बेले को ओपन गोल था पूरा फिनिश नहीं कर पाया Furia dominating this side of the map here, and now it's just Schweppes all by himself. Yeah, he made it in the top 4 eliminators of the tournament. And you know what? I think he wants to remain there. But the nade is looking good. Puts him down to half HP. The second one might just get him. He tanks it once again. And he's cooking his own piece of utility onto Igor. Just going farm wide. He's going to be a little bit too solo there. Wait for your team. And you know what? Silence is there to silence the competition. That's Furia up to 4. Good exit from the compound. अर्जेंटीना भी बहुत स्ट्रांग है यार ये मेसी तो आते पहले मैच में हैट्रिक दे दिया And it's looking to go for the win against Ulf. Wait, he's down. He is down. He is down. Brazil looking to win this game. He got Aaron, and now. So guys, like karo, subscribe karo. Soulless here. Actually, that might be the other way. No, yes, Catch does pick him up. So it is gonna be a 3 versus 4. Furia should be able to get the full reset here. They have the zone as well. I mean, this is Furia's game to win 100%. They should have this in the bag. Come on, you're in 13th position, 61 points. If you get over 65, favorite player, you're not going to be in the top 15. So Furia, this could be their ticket to the finals if they secure it. But Ulf, we know what these guys can do. Favorite all player. Odds are stacked against them. They might so World Cup wise, as Aaron on the front line. It's not Bigatron like that one before in PMGO Season 1, but you know what? He might be trying to do something similar onto Furia, but he's got some teammates to back up that play.
This is Furious win Kane, हाँ बे 100%. There's no way they lose this. Let's see what they can do. Ulf on the move. Igor is isolated by himself. That's a little bit of a mistake here. They're allowed to be able to push up with those smokes. And now let's see what Furia could do. No you till left. Oh, never mind. Silence has the nade. That's you. तो ओलिस का तो गेम ही हुआ है ना, प्ले मेकर है यार वो, Big knock there. जो टोनी क्रूज और मॉड्रिच था, Up close and personal, but पूरा it's all प्ले बना के over. देते वो टीम को. It's gonna be a Furia win here. Brazil with a big comeback. I love the way they were playing that 3. Nazario Ronaldo, भाई बहुत मारता था. Safe and Rivaldo getting back Ronaldo. right into the game. Furia, really, the execution, it was not one of the most aggressive game tournaments so far, that's for sure, but just the macro execution was beautiful. The amazing use of that compound in the center of the circle with the squad house. And one, I would say the game-winning play for me was not even that final fight against Ulf, it was the way they pushed onto E Arena. Minar9, goes to the vamos Carlo! On the eastern side of the road. They go for the wide northern western. Roberto Carlos था ना भाई, Roberto Carlos. अबे Roberto Carlos तो उठे सूट. So methodical on that engagement, Furia. There was so much. Roberto Carlos तो उठे सूट, जहाँ से जगह वहाँ से पेलता है. Furia, with that performance, with that chicken dinner, I am proud to see this team go ahead and play in the grand finals. Yeah, let's get it going. Yeah, That's it. Furia showing that, you know, Roberto Carlos तो जिधर से हपची से जगह मिल रहा है उधर से पेल रहा है, जिधर से जगह मिल रहा है उधर से पेल रहा है. play, and yes, they did. You know, Coach Knight is really excited for this squad. As you see, Silence gonna be the MVP. 5 eliminations, 383 damage, 41% contribution. चलो shit. Not the most insane aggressive, but very. इसी के साथ हम अपनी आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं और कल इसका फाइनल्स होने वाला है. So we will be back on YT tomorrow, same timing. Okay. मिलता है आपको सेम टाइम पे कल. दो मुकाबले काफी ज्यादा वापस तो कल सीधा, और मोस्टली कल किक पे देखते हैं यार. किक अभी मैंने वाईटी पे थोड़ा फोकस कर रहा तो किक अपन तक कर नहीं रहे. किक पे भी बहुत जल्द करेंगे कुछ ना कुछ किक के लिए भी. तो कल मिलते हैं. परसों है, परसों है क्या बात कर रहे हो. And you can see, man, this game was. परसों है 3 तारीख से, 3 तारीख को कल फिर अपन कुछ गेम खेलेंगे वाईटी पे, ठीक है. कुछ पीसी गेम खेलेंगे. ब्रांड का क्या सीन, ब्रांड तो चल रहे हैं भाई. चलो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. सारे ख्याल रखो अपना. कल कोई पबजी पीसी खेलते हैं अपन, कल स्ट्रीम पे चिल करेंगे. पबजी पीसी वॉच पार्टी भी 2 दिन हो गई, कल पबजी पीसी चिल होगा. तो तब तक लव यू ऑल, टेक केयर.